Our chief guest, Shri Siddharth Singh, Honorable Minister for MSME and Export Promotion, is on his way. वो भी कुछ ही पलों में यहाँ आने वाले हैं. बस कुछ पलों का इंतजार और फिर हम आज का कार्यक्रम
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस कॉन्क्लेव में जिसका नाम है उभरते सितारे ऑफ उत्तर प्रदेश। We would like to welcome our esteemed guests and the dignitaries for this event organized by Elets Technomedia. Our host partners are Department of MSME and Export Promotion, Government of UP and ODOP. Our supporting partners are SIDBI and India Exim Bank. Elets Technomedia is a premier technology and media research organization of India and Middle East. We have spread our wings since 2003. We have been championing the cause of governments, building knowledge and sharing platforms, and highlighting the importance of innovations in various sectors. We are truly honored by the presence of our Honorable Minister, Shri Siddharthnath Singh, and Additional Chief Secretary, MSME and Export Promotion, Shri Navneet Sehgal ji, who have graced us with their presence and took out some valuable time from their busy schedules to be here. I would like to invite Shri Siddharthnath Singh ji, Shri Navneet Sehgal ji, and our CEO and Editor-in-Chief Dr. Ravi Gupta कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कहा जाता है कि इस परंपरा से हम श्री गणेश का आह्वान करके हर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। I would like to invite our founder, CEO and Editor-in-Chief Dr. Ravi Gupta to welcome our Minister and Chief Guest Shri Siddharthnath Singh with flowers. रवि सर, आपसे अनुरोध है कि आप श्री नवनीत सहगल जी का भी स्वागत पूर्ण से कर दें। And now I would like to invite Dr. Ravi Gupta to give a welcome address and welcome everyone out here. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी का। हम लोग बहुत आभारी हैं कि सर आप इस कार्यक्रम में आए और आज जो एक्सपोर्ट सेक्टर है यूपी का उसको आपने इंकरेजमेंट दी है। आज उनका उत्साह बढ़ा है आपके आने से, तो बहुत बहुत आभारी हैं हम। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, Honorable Minister, MSME and Export Promotion, Government of Uttar Pradesh. Let's welcome him with a huge round of applause. Thank you, Ajay. And we are honored to have Shri Navneet Sehgal ji, who is the Additional Chief Secretary, Department of MSME and Export Promotion, Government of Uttar Pradesh, who is a key driver and he has been a great support in organizing this event. Thank you and welcome Shri Navneet Sehgal ji. Thanks for joining in. And we have a representation from senior officials of SIDBI, India Exim Bank, and some of the big and important export organizations, export associations, MSME associations, and ODOP related officials and ODOP related bodies and industries who are here. So thanks for joining each of you. We are encouraged to have you with us. And this whole event has been like designed to discuss about the
export sector and the MSME sector of the UP, and how to make it reach new heights. And government is announcing several new initiatives, new policies in this direction. आज हमारे माननीय मंत्री जी उन जो कदम सरकार उठा रही है उसके बारे में आज बात करेंगे. So I welcome you all, and we are grateful to have you here. And briefly about Elets. Elets एक ऐसी संस्था है जो पिछले 18 साल से हम लोग 4 मैगजीन्स निकालते हैं, ई गवर्नेंस के बारे में, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में. एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ इनोवेशंस एंड आईटी help in improving each of the sectors' efficiencies and growth. So welcome you all, and thank you for joining us here. Namaskar. We are truly privileged कि हमारे साथ आज हमारे माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं. And we are also honored by the presence of Shri Navneet Sehgal, Additional Chief Secretary, Department of MSME and Export Promotion. Together as a team, they have been steering the ship of development in UP, especially for the MSME sector. मैं अनुरोध करूंगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह से कि अपने आशीर्वचनों से वो हमें कुछ अच्छी सी बातें बताएं, एंड आज के कार्यक्रम में हमें MSME और उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ बताएं. बहुत बहुत नमस्कार सबको, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पे बैठे हुए मेरे कोलीग श्री नवनीत सहगल जी, साथ ही रवि गुप्ता जी, द फाउंडर CEO and editor in chief of Elets Technomedia Private Limited. मुझे पता चला कि सिद्धि से भी कोई मुंबई से आया हुआ है, एक्सिम बैंक से भी हैं, तो वेलकम बोथ ऑफ यू, बिकॉज आप दोनों के अलावा साथ ना हो तो ये स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी. आई थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अस, सो थैंक यू फॉर कमिंग. ये जो स्कीम है, स्कीम का जो लॉन्च हुआ था निर्मला सीतारमण जी ने लखनऊ से किया था, एंड इट्स अगेन अ हैंड होल्डिंग स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स. जो निर्यातक हैं उनको किस प्रकार से हम लोग और प्रोत्साहन दें, उनकी कठिनाइयों को और किस प्रकार से उनको सुलझाएं और उसको आगे ले जाएं. प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और वो चाहते हैं कि भारत जो है एक ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बने, और उसमें कहीं बनना है भारत को तो उत्तर प्रदेश उसकी नींव है, या रीढ़ की हड्डी में बोलो. So, since we become the backbone, and we have, I said that we have more than 90 lakh MSMEs or 9 million MSMEs, which was sent in 2017 to us. और उसके बाद हम लोगों के विभाग ने 80 से 85 लाख और SMEs खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी ऐड हो जाता है. तो इतना बड़ा बेस होने के साथ साथ certainly we become a good base to welcome technology, welcome innovations, and to be part of the global supply chain. and उस दिशा में हम लोग काम भी बहुत कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब कोरोना काल आया तो कोविड 1, कोविड 2 था. कोविड 1 के अंदर ही हम लोगों ने एक कंसल्टेंट PwC को अपना कंसल्टेंट्स बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि नाउ इज द टाइम, बिकॉज चाइना में भी और मेनी अदर कंट्रीज विल विड्रॉ आउट ऑफ चाइना, तो इंडिया को एक मौका मिलेगा. इंडिया को मौका मिलता है तो यूपी को बड़ा मौका मिल रहा है. तो उस दिशा में उनके मार्गदर्शन में ये हम लोग ने ये कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया. एंड
उसके अंदर हम लोग ने एक एक्शन टू बी टेकन रिपोर्ट तैयार करी है। वी हैव seen potential for UP products in 31 new countries. That could be the new initiatives for the exporters. हमने narrow down करा है 15 sectors तक की. We can add more sectors certainly, but हमने अभी narrow करा है 15 sectors and we have just picked up 100 products. हम इन्हीं को कहीं हम एक प्रोत्साहन जो हम लोग की जो स्कीम है, इसके अंदर उभरते भारत भी केंद्र सरकार की स्कीम को हम जोड़ते हैं, तो वी विल एक जो ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ जो है, आज हम लोग 1,21,000 या 25,000 करोड़ पे है एक्सपोर्ट्स यूपी का, वो नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ 26-27 तक की 2026-2027 तक की पहुंचता है। लेकिन हम लोगों ने नई एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर द लैंडलॉक स्टेट जो है उसको हमने ओवरकम करने का प्रयास किया है। देयर आर मेनी अदर स्कीम्स, नॉट ओनली फॉर दैट वी आर प्रमोटिंग फ्रॉम ऑल द इंडियन एयरपोर्ट्स वेयर यू वुड लाइक टू सेंड योर सैंपल्स, नॉट ओनली द यूपी एयरपोर्ट्स। उसके साथ साथ हम लोग ने फ्रेट के साथ साथ ये सैंपल्स का एग्जीबिशंस के अंदर और प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। वी विल, गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर एग्जीबिशंस। वी हैव पिक्ड अप द दुबई एक्सपो 10 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक की दुबई एक्सपो में UP will be focusing and participating in that in a very big way. उसके अंदर हम लोग का जो ODOP स्कीम है, one district one product, which is taken, मतलब it's an eye catcher, I would say, जो world over इस समय सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, not only in India, वो जो है वो भी बहुत large scale में हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं। जो नीचे की जो SMEs है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, बिकॉज ऑफ ODOP स्कीम इट्स टेकिंग द UP रूरल इकोनॉमी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है हम लोग का। अभी हम लोग ने एनालिसिस करे थे, 38% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ UP हैज जम्प्ड बिकॉज ऑफ ODOP। अब ये सब चीजें जो है एक बेस बनता है। उस बेस के अंदर ये उभरते सितारे जैसी स्कीम जब आती है, विच इज प्राइमरली फॉर द एक्सपोर्टर्स, और आई मे से जस्ट फॉर द एक्सपोर्टर्स, और उनकी हैंड होल्डिंग करती है जहां पर आपको फाइनेंशियल नीड्स है, आपको इक्विटी है, डेट्स है, और एनी अदर फाइनेंशियल नीड्स, आप उसको सपोर्ट करते हैं। And you pick the champions. Champion selection is not based on who is just performing well. It's on your process, product, innovations, technology that you are ready to accept or using. It's good for the startups. It's also good for the companies or the exporters already there. But you want to change yourself. I would rather say कि उभरते सितारे जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर दोज एक्सपोर्टर्स एंड दोज स्टार्टअप्स हु विश टू इम्बाइब अ चेंज। और चेंज के बिना आप परिवर्तन नहीं होगा तो आप नए मतलब जो रेस है उसमें आप पीछे रह जाएंगे। हम कहें कि हम लोग उसी ढांचे में चलना चाहते हैं और नई चीज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई और नई चीज लेकर आ जाएगा और हम उसको हम जो कर रहे हैं वो छूट जाती है। और फिर हम जाते हैं कि हमारे डेट्स बढ़ गए हैं, हमारे बैंक के पीछे जाते हैं कि हमारे को रिस्ट्रक्चर करो। लॉट ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग इन दैट। मेरा इतना ही है कि आप लोग इस स्कीम के बारे में जितना भी प्रचार प्रसार हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होएगा, उत्तर प्रदेश का जो एक लीप फ्रॉग है, जो हम लोग ने अनुमान लगाया है कि हम
जो जहां पे आज खड़े हैं और 2026-27 तक की ये एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश का 3 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा, उसके अंदर ये बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन हम इसको जमीन तक की नहीं ले जाएंगे, हम अपनी ओडीओपी के साथ नहीं जोड़ेंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग इसके अंदर प्रोफेशनल्स नहीं लेकर आएंगे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड so does my colleague also, lateral entries are must to make UP a real good export hub. जब ही एक्सपोर्ट हब बन सकता है जब हम लैटरल प्रोफेशनल्स लेकर आए। मैंने देखा है कि आप अप्रैल के, मैं अभी बात कर रहा था, नोएडा गया था, तो नोएडा में अप्रैल वाले आए थे मुझसे मिलने। उनकी जो तकलीफें हैं वो हम सरकार में बैठ के या अधिकारी जो है हम नहीं समझ सकते। वो इसलिए नहीं समझ सकते कि क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व है। मगर वहीं से कोई एक आदमी जो अप्रैल या टेक्सटाइल में हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ हमारे साथ बैठ जाएगा, हम उसको एक जगह देते हैं, तो ट्रस्ट मी दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स टू द एक्सपोर्ट्स। इसी तरह अन्य प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों ने एक सिद्धार्थनगर में एक चावल जो होता है जिसको कहते हैं काला नमक चावल, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो लुप्त हो गया है। गौतम बुद्ध अपने समय में लेकर आए थे, रशिंग आउट ऑफ द टाइम। ओके, आप एकदम बगल में आके खड़े हो गए तो लगने लगा कि मैं नहीं, दैट्स ओके। मैं सोचा, आई रियली थॉट कि आपने, जो होता है ना हम लोग को जब बोला जाता है कि आप जरा समय कम हो गया तो कोई आके बगल में खड़ा हो जाता है और एक स्लिप दे देता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि साहब हमने ज्यादा बोल दिया। तो मैं काला नमक चावल के बारे में बता रहा था। तो काला नमक जो चावल है उसको हम लोगों ने, I must say that my compliment my colleague here, Elets Technomedia, he must have visited at least 4-5 times there. It was an idea which CM wanted. I was also looking at it. काला नमक चावल is something traditionally जो आप लोग बैठे हो चाइनीज खाते हैं जिसको स्टिकी राइस कहते हैं। गौतम बुद्ध जी जब जा रहे थे सिद्धार्थनगर छोड़ के तो लोग रो रहे थे, तो उन्होंने कहा ये चावल रखो, इसको बुद्ध चावल है, मैं किसकी, जब तक ये है तो मैं जीवित हूं, मैं आप लोग के साथ हूं। वी रिवाइव दैट, उस प्रोसेस को रिवाइव किया थ्रू अवर वेरियस स्कीम्स। जो 50-60 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो एक्सपोर्ट 500-600 रुपए किलो हो रहा है टू फार ईस्ट। दिस इज द पोटेंशियल यूपी हैज। अन्य चीजों में पोटेंशियल है, मगर आप लोग सब लोग साथ आएंगे, एक्सपोर्टर्स आगे आएंगे, गवर्नमेंट इज रेडी टू हेल्प एंड हैंड होल्ड यू। सरकार का एक दायरा होता है, एक लिमिटेड दायरा होता है, मगर उसके अंदर भी बहुत तरीके हैं किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। आई वुड अगेन वेलकम सिडबी एंड एक्सिम बैंक फॉर bringing this kind of a scheme for the exporters, और साथ ही साथ मैं एलेट्स का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि इसको आप एक प्रचार प्रसार के एक डिस्कशंस के माध्यम से आगे ले जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि दिन भर में जो डिस्कशंस होंगे दे विल बी वेरी फ्रूटफुल। हम लोग एक एंड रिजल्ट्स पे आएंगे जिससे कि हम उसको एक अपने स्कीम के अंदर लेकर आए। It just doesn't remain a discussion. It should form a part of how the next step we are going to be taking. So ये सब देखते हुए आप सबका मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इनफैक्ट आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट्स के बारे में एंड यूपी के पोटेंशियल के बारे में। इनफैक्ट अंडर योर लीडरशिप उत्तर प्रदेश एक्चुअली काफ़ी आगे तक आ चुका है। हमें पता है कि फ्लिपकार्ट पे भी अभी ओडीओपी ने रिकॉर्ड सेल्स करी हैं एंड
काफ़ी हद तक ODOP प्रोग्राम जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में भी इसके बारे में काफ़ी फेमस हो चुका है. It's only under the able guidance of our Minister Shri Siddharthnath Singh ji and Shri Navneet Sehgal ji. I would request now Dr. Ravi Gupta to give a memento to Shri Siddharthnath Singh ji. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I would invite Shri Navneet Sehgal for the keynote address. Thank you. No, the good thing about my minister is that he has plenty of time to listen to me. So don't worry. Thank you. You see, this is one of the first program of the series of program that we had planned since the fund was launched by Nirmala ji here in Lucknow. As you are aware, we are a kind of a disadvantaged state in terms of exports because we are a landlocked one and we can't compete with the coastal states and some of the states which traditionally have an export background. But we have been doing extremely well in the last 4.5 years and our exports have, as the Minister was saying, jumped by almost 38%. And to that extent that last year, despite Corona, many of the states, they lost numbers in terms of the exports. But our numbers did not go down. They were almost 1,000 crores up by last year. So there is a huge potential for exports from here. हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निर्यात का एक बहुत बड़ा स्कोप है. बहुत सारा हमारा अकाउंट फॉर नहीं हो पाता है बिकॉज वो यहाँ से दिल्ली से एक्सपोर्ट हो जाता है, वो दिल्ली के खाते में चला जाता है. वो सबको हमारा जो टारगेट है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, और टारगेट इज टू increase the exports to at least 3 lakh crore in next 3 years. For that, Ubharte Sitaare like scheme is very beneficial, and I would thank Exim and Sidbi both for sending their officers to explain and to kind of propose the hand-holding exercise. मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस प्रोग्राम को अब हर जिले में ले जा रहे हैं. एक्चुअली एक एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने कंसल्टेंट को हायर किया ही, बट एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट. Combined with the one district, one product program, we have identified almost now 67 products. Those 67 products for each district, we have done a total diagnostic study of each product. Diagnostic study includes the whole SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of each product. And during that, we have found out there are a lot of interventions which are needed. There could be hard or soft intervention. Soft intervention, we are working on policy, and Ubharte Sitaare is one of the soft interventions that are needed. Because during our discussion with the exporters, we have found that there is very less knowledge of financial opportunities available to the exporter. They are working on the traditional LC method and the routine export credit systems. But we now have many new instruments of finance which are available to our exporters. But हमारे यहाँ वो हमारे जो छोटे शहर में जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उन तक वो जानकारी नहीं है. दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड मार्केट्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी एक ग्लोबल सप्लाई चेन, जो इधर कोरोना में इतनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, एंड मेनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज हैव बीन ग्रैब्ड बाय आवर पीपल. Yesterday only I met an exporter. वो पूरा जितना हमारा Mercedes और BMW है उन सब के ऑटो कंपोनेंट्स का ऑर्डर अभी हाल में मिला है. Just recently they got an order for all those components. We have people here who are making
parts for F-16 and other high-end technology your instruments. So there is a huge scope and we need to fill that gap. उस गैप को फिल करने के लिए हमको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमने एक एक्सपोर्ट प्लान भी साथ साथ बनाया है, उस एक्सपोर्ट प्लान में देयर आर पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज and there are issues which needs to be addressed. And I would thank Elets and both these organizations. Now we are making a program to take these teams to district level. District level बाद में जाएं, लेकिन पहले हम divisional level पे जरूर जाएंगे. और मैं हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यूपी की, वो I will get them involved into it so that they get their exporters to sit with these two organizations and help them, one, identify units which can be supported in Ubharte or Sitaare fund, and also to let them know about new innovative your instruments of finance which could help them both fund-based and non-fund-based support for export. क्या है, working capital is a very big issue. You know, a lot of units, they had a lot of adverse impact during Corona on their working capital. Government came up with the emergency credit line. Still अभी भी बहुत सारी issues हैं जो कि हमारे जो फाइनेंसिंग नीड्स है उसको एड्रेस करना चाहिए. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी लोग आए, न केवल एक्सपोर्टर बल्कि हमारे जो सरकारी भी लोग हैं आज इधर इस फंक्शन में, वो दिन भर बैठे और समझें. ये बम्बई से आए हुए लोग रोज तो नहीं आएंगे, बट हमारे लोग यहाँ रहे. दे शुड अंडरस्टैंड क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे हम जो हमारे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं कैसे हम उनको हैंड होल्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं. एक और चीज़ जो रह गया है जो मैं सिडबी से रिक्वेस्ट करूँगा वो है फाइनेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. इसी अगर हमको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ना है तो अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. तो टेक्नोलॉजी में नई दोनों सॉफ्ट और हार्ड टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. काफ़ी इश्यूज इसमें आ रहे हैं कि लोगों को ये नहीं मालूम कि हमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगी. सिडबी की अपनी स्कीम्स भी हैं उसमें फॉर एक्सपोर्टर. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर उसके बारे में भी आप आज दिन में बताएंगे ताकि जो टेक्नोलॉजी का रिलेटेड इशू है प्लस फाइनेंस दोनों आज एड्रेस हों, हमें भी जानकारी हो, हमारे अधिकारियों को भी जानकारी हो कि ये कौन सी स्कीम है, कैसे हम उससे लिंकअप कर सकते हैं. बहुत बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में स्कोप है. काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसका ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया. अभी पिछले साल भर में हम लोगों ने लगभग 1000 नई यूनिट जो हैं अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में नई रजिस्टर की हैं. मतलब दे आर रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड. सो देयर आर मेनी ऑफ देम स्टिल लेफ्ट आउट. वी आर ट्राइंग टू गेट देम ऑन बोर्ड so that they get into this organized sector, the formal sector where we have a regular communication with them. कोई नई चीज़ भारत सरकार ने की है या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, हम उनको कन्वे कर सकें. एक जो और इशू है वो मैं एग्जिम बैंक पे छोड़ना चाहूँगा. देयर कुछ देश ऐसे हैं, हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स को ये इशू आए थे कि वो उन देशों की एलसी कमर्शियल बैंक्स नहीं खोलते हैं. ये कौन सा देश था वो मेरठ वाला, एक आई डोंट नो देयर इज एन इशू, Ethiopia or some country. We will convert you so that those chaps they have confirmed orders for export but they are running around here and there to get that finance. वो हमारा कोई शायद वहाँ ऐसा कोई रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं है. तो एग्जिम बैंक के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में है बहुत सारे. हाँ, तो वो एक थोड़ा सा हमारा वो भी इशू एक थोड़ा आप आए एग्जिम बैंक तो वो इनके सामने रखिएगा. और दूसरा ये हम लोग क्या कोई हेल्पलाइन शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ सिडबी एंड एक्सिम बैंक फॉर एक्सपोर्टर्स. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ हेल्पलाइन वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस, पीपल कैन बी हैंड हेल्ड. उनको हम लोग आगे लाएं बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्कोप है. हम 3 लाख करोड़ बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं. ये थोड़ी हैंड होल्डिंग की हमको आवश्यकता है. बाकी जो चीज़ें हैं जो लैंडलॉक को सेटल करने के लिए ड्राई पोर्ट्स की और उसकी वी आर वर्किंग ऑन दैट. वी वर्किंग विद कॉमर्स मिनिस्ट्री टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज. ऑल्सो हमने अपनी पॉलिसी में भी अब
फ्रेट सब्सिडी को आसान कर रहे हैं हम लोग, और पहले ट्रक्स पे अलाउड नहीं थी, उसको भी शामिल कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ से बाय ट्रक कोई माल जाता है पोर्ट में, उसको भी हम लोग सब्सिडाइज कर सकें, सो दैट वी गिव देम कॉस्ट एडवांटेजेस। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जब हम एक्सपोर्ट के पूरे फील्ड को हम देखते हैं। जो सबसे बहुत आप रिसेंट है वो है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। So I am happy Flipkart is here. Amazon also we are working with. Flipkart, only Flipkart has sold worth our ODOP items worth 1,000 crore in last 1 year. हम लोग now we are signing an MOU with Amazon.com. .com is for exports and Flipkart.in is for, or Amazon.in is for local listing. तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को भी ये प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स के जो एक्सपोर्ट के प्लेटफॉर्म में, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ तक लाने के लिए। और बड़ा अच्छा है आज ये फ्लिपकार्ट के लोग हैं, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, कैसे क्या होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस प्रोसेस को, जो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, एग्रेसिवली करेंगे, ताकि ना केवल फाइनेंस की बल्कि टेक्नोलॉजी और जो और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स की, तो हमको वहाँ भी उनको एक्सपोर्टर्स की मदद करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने बड़े अच्छे आप नंबर में, आई होप देयर आर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो, तो ये इनको कम्युनिकेशन आज दिन भर आपका रहेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि ये आप जरा पवन बैठ जाना आपके साथ, तो वी ट्राई एंड गेट सम हेल्पलाइन फॉर एक्सपोर्टर्स। थैंक यू। Thank you, Navneet sir. In fact, आपके जो words थे that gave a very good insight about the exports of UP and UP government कहाँ तक exports को ले जाना चाहती है, which is very valuable at this point of time because एक export और MSME sector से ही किसी भी state का जो है वो growth होता है। I would now request Dr. Ravi Gupta to give a memento to our chief guest, Sri Siddharth Singh ji. We can definitely have a round of applause here. I would request Dr. Ravi Gupta to give a memento to Sri Navneet Sehgal sir also. We have two beautiful trophies also for our chief guest. Ravi sir would present this trophy to Sri Navneet Sehgal ji as well. And now I would like to invite Dr. Ravi Gupta for the thank you address. बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का, जो उनकी ओर से encouragement है, and the overall government is taking so much interest in the promotion of exports and SME and MSME sector in the state. It is a matter of great pride for UP, and as Navneet ji has explained that in spite of Corona, the exports from UP have actually increased, and there are a lot of exports initiatives which are going to happen more. And as Honorable Minister has explained that several new actions are being taken to reach out to the more number of exporters and MSMEs for their growth. So with this encouraging note, we can conclude the inauguration, and I thank again. Yes, I think I am with one more step.
We will conclude this session now, and we will have a small tea break, and we will then start our sessions. Thank you so much. Give a lot of applause.
और वैसे भी कहते हैं ताली बजाने से बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत सारी इंद्रियां हमारी जो है वो खुल जाती है। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक वी स्टिल हैव सम पीपल जो भी बाहर हैं, एंड वी वुड बी रियली थैंकफुल अगर सब लोग आ जाए, बिकॉज ये सेशन इनफैक्ट हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन इनफैक्ट आपको सारी जानकारी देगा कि व्हाट एग्जैक्टली उभरते सितारे प्रोग्राम इज। So another 1 minute and we'll just start the session. Thank you so much Meghna ma'am, thank you so much Rahul ji, thank you so much Shrikant ji, thank you so much everyone on the dais जो यहाँ पे हमारे स्टेज पे बैठे हैं कि आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। Some of them have come all the way from Mumbai to give us an insight about the उभरते सितारे प्रोग्राम। बहुत जरूरी है कि इन लोगों का ये सेशन हम लोग अटेंड करें, बिकॉज एग्जैक्ट प्रोग्राम क्या है हमको इन्हीं लोगों से पता चलेगा। और बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब एक्सपोर्टर्स इन लोगों से आमना सामना कर पाते हैं, उनके कुछ क्वेरीज हों, कुछ सवाल जवाब हो। वी हैव अ क्यूएंडए सेशन इन द एंड आल्सो। सो थैंक यू सो मच एवरी, आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। वी कैन इन फैक्ट नाउ स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। वी हैव अ प्रेजेंटेशन विद मिस मेघना जोगलेकर मैम। Somebody to give the presentation. Namaskar. I will just wait for a minute for the presentation to get uploaded. No, I'm okay. I hope everybody can hear me clearly. No, I'm good. Yeah, we can. Next.
Achha, so I'll just have to go like this, is it? But it's not scrolling now. Sorry, just give us a minute. I think some technical. Who is presenting? I'm presenting, but I don't know how to. ये नहीं जा रहा है। इधर जा रहा है, but इधर नहीं आ रहा। PPT No problem. Thank you everybody for waiting. Namaskar once again. On behalf of Export Import Bank of India, it is our pleasure and honor to be here today. In fact, we must thank the organizers, conclaves of this kind, especially, the Ubharte Sitaare conclave. It's important that, this program outreach happens to the right sort of an audience, and it sort of benefits everybody. SIDBI is of course our partner institution in this program, and they will be also speaking. आज हम एग्जिम बैंक की तरफ से 2 प्रेजेंटेशंस करेंगे. आई विल जस्ट टॉक अबाउट द उभरते सितारे प्रोग्राम. हम इस बेसिकली प्रोग्राम क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हु कैन अवेल दिस प्रोग्राम, एंड आई वुड लाइक टू क्लोज विद सम एग्जांपल्स जो हमने हु हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम इन द रीसेंट टाइम्स. And then my colleague Rahul, of course, he will. So I think आज सुबह the Honorable Minister, he also mentioned the program was launched in August by the Honorable Finance Minister in Lucknow itself. And at that point of time, Exim Bank had released a study on export potential of Uttar Pradesh, and Rahul would be making a brief presentation on that. I really hope कि ये presentations आपको useful लगे. And please, there is a question and answer session in the afternoon, but you do not hesitate to reach out to us. And वैसे तो on the program or some things, all details are available on our website eximbankindia.in. सुबह नवनीत सहगल जी ने एक हेल्पलाइन की भी बात करी, तो हमारी एक और वेबसाइट भी है एग्जिम मित्र करके. तो अगर एक्सपोर्टर्स की कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप उस पर भी जाके आप वो चीज एक्सेस कर सकते हैं एंड सी इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. तो आई विल जस्ट क्विकली स्टार्ट. Sorry. Okay. Now, first of all, Export Import Bank of India कुछ लोगों को मालूम होता है और कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, because we are not like the typical State Bank of India or other commercial banks जिसका branches you see in every corner of the city. So Exim is of course a financial institution. हम लोग we were set up in 1982, and in fact soon we'll be having 40 years of operation. And Exim Bank, just like any other Exim bank, so you would realize most of the countries have their Exim banks. Like there is US का Exim Bank is there is Export Import Bank of China, there is Exim Bank of Thailand, or there is a Korea Exim Bank. Similarly, India Exim Bank also. Our role is to promote the foreign trade of that country and basically to take Indian companies global. So this is the sort of mandate that we work with. And now 40 years of operation, I thought I'll just give a quick. We are of course 100% owned by the Government of India. Before this presentation is of course about the Ubharte Sitaare program, but just a quick glimpse on who we are. एक quick slide में हम cover करते हैं. हम लोग को बोलते हैं that we are a policy institution on behalf of government. It means we implement major policy programs of Government of India. For example, सबसे flagship program जो Exim India का है, which is what we call as the lines of credit. That is when India gives bilateral assistance to various countries. It is implemented through the Exim Bank of India. So it's in whether it is lines of credit or whether it is buyer's credit. From India, a lot of large project exports out of India which are happening are being supported by us, and a lot of Indian project exporting community stands benefited by these programs. The second leg, what I would call, is the commercial program, or what we call as export capability creation. Basically to say this कि अगर आप आज बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी टाइप की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हो,
भले आप टर्म लोन कर रहे हैं, आप कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन टुडे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कैन सपोर्ट यू. So there are of course a gamut range of programs, or for example another of our flagship program what we call is the overseas investment finance. मतलब if an Indian company wants to set up a joint venture or a wholly owned subsidiary overseas, then Exim Bank can finance these sort of operations very regularly. So these are some of the things. Baki, of course, if you visit our website, all data is available, or if there is any specific question with regards to any particular program, we'll be happy to answer to that query as well. Today, I didn't want to spend too much time on the other things. Of course, the Ubharte Sitaare, the bank, of course, as I said, has been in operation. And मैंने कहा हम लोग typically large project exports we have been supporting from India. बट हम लोगों ने एक पॉलिसी पेपर सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड एक्चुअली इस प्रोग्राम का ओरिजिन कब हुआ, फरवरी 2020 के बजट में द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द उभरते सितारे प्रोग्राम, एंड सिडबी इज आवर पार्टनर इंस्टीट्यूशन इन दिस प्रोग्राम, एंड आफ्टर दैट विच एक्जिम एंड सिडबी ने ये प्रोग्राम्स अपने अपने बोर्ड्स में अप्रूव किया. बट टू बी फेयर, फरवरी में अनाउंस हुआ और मार्च में कोविड हो गया लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर वाज अ लिटिल बिट म्यूटेड आई वुड से. दिस ईयर द प्रोग्राम हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन. But last year, of course, there has been a lot of outreach activity through various industry associations, through various incubation centers of IITs and IIMs, and a lot of potential pipeline is being built under the program. So this was exactly the budget speech of the Honorable Finance Minister. It is therefore to read. I'll just quickly recap where she says, many mid-sized companies are successful domestically, but not in the export market, and hand-holding support is being extended. She has, of course, announced a scheme of 1,000 crore. I really do not want anybody in the audience to get confused in terms of the 1,000 crore. Rather, mainly understand what the program is all about. So, actually, what is the Ubharte Sitaare program? The Ubharte Sitaare program is basically, here we are trying to identify Indian companies that are future champions but with export potential. And as exactly as Honorable Minister mentioned today morning, for us to identify you as an Ubharte Sitaare, it is very important you have some sort of a unique value proposition. Now, that unique value proposition could be in terms of your product, your process, your technology, your markets, or any other differentiating criteria. And this differentiating criteria is what is going to put you in that additional league in terms of a high growth or sort of displaying traits to become the global champion tomorrow. So this is our aim, that we are trying to identify such companies. We are of course sector agnostic, and when I'll come to some of the examples that we have supported under the Ubharte Sitaare program, I think it will become more clear कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. अब इसके अंदर हम सपोर्ट किस तरह से दे रहे हैं? There are 3 pillars of support. There is debt. Debt is something I think all companies understand, where you can reach out for debt to various banks and financial institutions. इसमें equity का भी component है, and there is a small technical assistance or a grant component. I'll come to the pillars of the Ubharte Sitaare program shortly. And 1000 करोड़ का ब्रेकअप था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच पे, जिसपे हम लोगों ने वो ब्रेकअप ब्रॉडली दिया हुआ है. 900 करोड़ will be by way of debt by various banks and financial institution. Between सिडबी एंड एक्सिम बैंक हम लोग 40 करोड़ एक उभरते सितारे फंड, जो इनफैक्ट लखनऊ में ही लॉन्च हुआ था in August 2021. Exim and SIDBI are contributing 40 crores each, and 10 crores has been assigned for grant. And that fund, I think we are having a presentation. One of our colleagues will be joining from Mumbai as well to briefly explain on the fund part of it. अब इस प्रोग्राम का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे, as I mentioned, to identify and nurture companies having this differentiated technology, product or process. We want to extend hand-holding support to these companies. Or for example, there are companies who have remained stagnant for over a period, but because of, let's say, lack of adequate finance or push, have not been able to go to the next level. So we are trying to help them with our support to kind of go to that next sort of a level. And ultimately, see, all this support is eventually going to help the country in terms of the country's export, in terms of economic growth, and in terms of employment. I mean, at a very macro sort of an objective. अब इसके लिए हम जो करते हैं, when we say collaborate and engage, आज जैसे state government का initiative है, today we are here, UP state has been one of the front runners, for basically to make sure that this program reaches to every district of the state. So जैसे हम लोग states के साथ collaborate कर रहे हैं for informing about the Ubharte Sitaare program. Similarly, there are so many industry associations,
There are academic institutions. You'll be surprised, for example, academic institutions such as the IITs and IIMs, they all have incubation centers, and lot of innovative technologies coming out of this, and which we are trying to help and support. अब यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन जो हम बोलते हैं, तो हम लोग सी हियर द आइडिया इज नॉट फॉर देयर इज नो वे अ सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प सच अ लार्ज कॉज. हम लोग ये बाकी के बैंक्स के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं. हम कहीं नहीं चाह रहे हम आए आपके एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस करें, बिल्कुल नहीं. हम आ रहे हैं, वी वुड, एंड अगर आप सच में ऐसी ग्रोइंग कंपनी है लुकिंग एट वेरी हाई ग्रोथ रेट्स, we would want to come and top it on top of that and help you sort of grow that sort of that is the sort of objective here. Now अब इसका क्राइटेरिया क्या है? सी ऑब्वियसली व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक ग्लोबल चैंपियंस टुडे, एकदम लार्ज वैल्यू नहीं. सो टिपिकली आवर टारगेट यूनिवर्स हियर इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. For exam, of course, we have put a boundary condition of 500 crores by turnover, but typically our target audience would be small and medium enterprises. Now, that thing remains that you, in terms of your business model, there has to be something unique in terms of product offerings or business model offering. Strong company honi chahiye, promoter background and all. Of course, that is something that we will look into while we are looking to identify companies under this particular program. And of course, product quality. I think any company today which is into exports is the best example in terms of product quality. If it is exportable and it is finding market for itself, I think that sort of defines the whole thing. अब these are the three broad pillars under the Ubharte Sitaare program, जिसको हम बोलते हैं debt, there is equity and there is technical assistance. अब debt आप लोग सब समझते हैं. So today let's say you are a company which is wanting to grow. अब आप debt लेना चाह रहे हैं for your capacity expansion, आप machinery import करना चाह रहे हैं, आप कोई research and development करना चाह रहे हैं, आप आपके export operations को बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपका जो भी पर्पस whereby you feel your export capabilities are going to enhance, any sort of a thing we can cover under our term loan programs. Working capital assistance, for example, आपको कोई large export order मिलता है और आपको कोई you need funding for executing any particular working such large contracts, तो हम working capital assistance provide कर सकते हैं. फिर हम नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी देते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर लार्ज फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इफ यू आर नीडिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडवांस पेमेंट गारंटीज और परफॉर्मेंस गारंटीज और एलसीज फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, देन दैट एट नॉन फंडेड आल्सो वी कैन कवर. सो डेट तो ये एक चीज हो गया. Now this of course we say at competitive rates and at longer tenors, because ये कोई standardized product नहीं है कि हम बोल देंगे चलो 5 साल के लिए आपको X% पे हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है. एवरी कंपनी जो हम जिससे हम बात करते हैं, हम उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, हर एक का गैप अलग होता है. Some of the companies because of COVID cash flows have been hit. Some companies require longer tenor loans. So depending on our analysis, accordingly we are able to structure a product which is best suitable. There is an equity component under the Ubharte Sitaare program, and this is something very, very new, and even I am very much looking forward to the presentation from the Ubharte Sitaare fund. Now this fund of course has been established. It's a 250 crore fund where Exim and SIDBI have contributed 40 crores each, and currently the fund is in the process of gathering contributions from other banks. This fund will invest in equity and equity-like instruments of Indian exporting companies. तो fund के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनेंगे. Exim भी कहीं पे equity positions directly ले सकते हैं. And there is a small technical advisory. ये बहुत ही need based assistance sort of a thing है. Just to for example आप कोई certification कर रहे हैं, या फिर आप कोई consultant hire कर रहे हैं किसी specific export market के लिए, या कभी-कभी जैसे आपकी फैक्ट्री है और आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, बट आप जैसे फैक्ट्री को थोड़ा अपकीप करना चाह रहे हैं so that foreign buyers can visit you. For these very, very targeted sort of things, need-based grant assistance could be considered under the program along with the debt facilities that the bank is looking at. So I just hope in terms of this particular offering कि हम आपको किस तरह से support कर सकते हैं, this is clear. But फिर भी अगर कोई doubts हैं in the Q&A session, or we are present here the whole day today, please feel to reach out to any one of us with any sort of queries that you may have. And now I'll just quickly close the presentation by giving a few examples कि हमने इसमें क्या हमने narrative लिया किसी companies के बारे में, तो आपको थोड़ा idea लगे. As I said, the program gained traction and these are some of our beneficiaries under the program. अब जैसे एकदम first example जो है, बहुत छोटी सी company है Mumbai based, and very interesting product they make for phospholipids in the pharmaceutical sector. They actually cater to nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics company. Now already company का export orientation is about 80-90%, but they wanted to expand their facilities because
large pharma majors were not giving them because of inadequate capacity. और हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया एंड ये कंपनी हाल ही में प्रेस में काफी आई बिकॉज दिस कंपनी is the only supplier for India for mRNA COVID vaccines to Pfizer and Moderna. So छोटी सी कंपनी बट इसका ये यूनिक चीज था which is why the bank went out and supported this company in terms of their capacity expansion and we gave them a very long tenor loan. The second is another very interesting company. It is into defense drones. अब ये जो कंपनी है अगेन a small company but they received a very large order from the Ministry of Defense for drones given our border situation. While it was a domestic contract, we felt it was very important for Exim Bank to support this company for execution of this contract because the contract value was much larger than their current means. हम लोगों ने उनको इस particular contract execution में support किया है with the narrative that today once this company successfully executes this contract, it is going to put them in the next big league and going to open doors for their international operations. This contract execution is going to showcase their capabilities and tomorrow they can then tap for international opportunities in a very clear way. So this was our narrative here. The third company is a company engaged in pharma sector and again a very R&D oriented company. See for Ubharte, Sitaare, R&D, innovation, these are all things which are sort of going to help for us also to support these companies. अब इन लोगों ने R&D करके काफी मॉलिक्यूल्स बनाए, चाइना से इंपोर्ट्स काफी कम कर दिए, 70-80% कम कर दिए और हम लोगों ने इनको R&D लोन देके सपोर्ट किया. एक और कंपनी है विच इज इनटू एग्रीटेक सॉल्यूशंस. अब इन लोगों ने बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट IIT से पास आउट है प्रमोटर्स एंड बहुत इनोवेटिव सोलार कोल्ड रूम्स बनाए एंड दीज आर बेसिकली इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ पेरिशेबल. सबको पता है एग्री produce gets wasted a lot and I think their products can be installed right at the farm level. It increases the longevity of the products per se and very innovative products. So International Solar Alliance का नाम आप लोगों ने सुना होगा. They are trying to target their products to the ISA member countries and यहाँ पे इन लोगों को first large export order मिला जिसको हम लोग finance कर रहे हैं for this particular company. एक और कंपनी है. नाउ दिस कंपनी इज इनटू वेस्ट मैनेजमेंट इन द सेंस इनका जो रॉ मटेरियल है दोज आर दीज HDP प्लास्टिक, हम शैम्पू की बॉटल जो घर में फेंक देते हैं, सो दैट इज देयर रॉ मटेरियल. वो ये सारे गार्बेज कलेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री का उन्होंने नेटवर्क बनाया है. दे कलेक्ट ऑल दीज बॉटल्स, दे प्रोसेस इट एंड दे प्रोड्यूस नियर वर्जिन प्लास्टिक मॉड्यूल्स और इससे ये लोग बॉटल्स बना के बेसिकली प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं. And again, a company which was very inward looking because Exim Bank stepped in. Now they are thinking of looking at markets like Bangladesh and Sri Lanka. So we are helping these companies go forward. Next is a very interesting auto component company, which is I would say a fundamental technology company. अपने products खुद बनाती है, खुद के लिए market create करती है. So here also they did a small innovation, product innovation in the starter motor technology for two-wheelers. And they operate in the two-wheeler and three-wheeler segment और हम लोगों ने इनको R&D का सपोर्ट दिया हुआ है. Very quickly एक BLDC मोटर फैन, अगेन IIT पास आउट प्रमोटर्स है. इन लोगों ने एनर्जी एफिशिएंट फैंस बनाए हैं and I would say that they are a step ahead in terms of अब इनका फंडामेंटल मोटर टेक्नोलॉजी प्लेस में आ गया है. Now they can put at various sort of the same technology can be adopted across various FMCG sector. So this is another very interesting example where we are trying to help them with their capacity expansion. Another very small niche company in the auto component sector, they have a large market share already, but they are now setting up a 100% export plant for steel pistons. India में यूज ही नहीं होते हैं, ये पूरा एक्सपोर्ट करेंगे. इसको हम लोग मशीनरी लोन देके फाइनेंस करके सपोर्ट कर रहे हैं. Another company which is they basically make this non-sparking hand tools and they have replaced the technology from copper beryllium to copper titanium. अब टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से ये आइटम्स को लेस हजार्डस बना दिया गया है एंड जिसकी वजह से एक्सिम बैंक इनको इक्विटी और डेट के साथ सपोर्ट कर रही है. ये एग्जांपल्स हमने इसलिए चुने बिकॉज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट depending on a particular sector. You will realize that we are now sector agnostic and there are so many potential sectors in Uttar Pradesh. We have now started a district-wide outreach along with SIDBI and with the help of the state government, and under the one district one product, I can only imagine how much potential could there be and for us to identify
that what differentiation criteria that the promoters bring on the table, and how is it that we can look at supporting these companies. I think that would be all from my side. I will now call Rahul, my colleague, who will just quickly do a presentation on the potential from the state. And as I said, we are available here the whole day. आपको कोई भी query हो, there is a Q&A session in the afternoon, but आप लोगों को कोई भी query हो, please feel to reach out to us. Thank you so much. You can see here. Good afternoon, namaste. No, it's fine. After ma'am, what she spoke about Ubharte Sitaare, which has become one of our premium financial program today, if I may say so, in last 18 months or so. इस प्रोग्राम के इस प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूँ, और जब आप सबको शायद मुझसे ज़्यादा शायद पता भी हो सकता है, मगर एक जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बाद जो बात हो रही है उसको हम थोड़ा बहुत सामने उसको लाने के लिए कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। तीन चीज़ें हम ज़्यादा कवर करेंगे कि यूपी में उसका मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, पिछले 10 सालों में कैसे उत्तर प्रदेश ने तरक्की किया है एक्सपोर्ट्स में, दूसरा ट्रेड सिनेरियो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कितना बढ़ावा हुई है, और लास्ट जो काफ़ी ज़्यादा जिसमें मेरा फोकस रहेगा कि कौन से सेक्टर्स कौन से इंडस्ट्रीज है जिन पे यूपी का काफ़ी अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। आप इस स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि यूपी ने करीब $7.2 ट्रिलियन जो उसका जीएसडी किया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, टोटल गुड्स और सर्विसेज जो यूपी में हुआ है वो 7 से लेके अभी $17 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, 17 ट्रिलियन INR तक पहुंच चुकी है, जो काफ़ी अच्छी है। मगर ये बात आगे दाएं तरफ आप देखेंगे कि जब पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं उस पर यूपी थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, जबकि इंडिया का जो स्टेट है वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। मगर ये जिस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इंक्रीज किया है उस हिसाब से यूपी का नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में जो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी पॉलिसीज ला रहे हैं, आई एम श्योर दैट विल हेल्प यूपी टू इंक्रीज दैट एंड लेसन वाइडन दैट ग्रुप दैट इट हैज। आप कोई भी सेक्टर्स जो होते हैं, 3 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज पे होती है, और तीनों को एक साथ बढ़ना काफी जरूरी है। और यूपी ऐसे एक स्टेट जहां पर एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा बढ़ावा है, उस पर काफी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ बीइंग एन एग्रीगेट इकोनॉमी, और गंगा नदियों के सब यहीं इसी से पकड़ते हैं, काफी रिच है एग्रीकल्चरली, तो दैट पोटेंशियल इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल दैट इट हैज। और उसको आप देखेंगे करीब आज के दिन में भी करीब 21% का शेयर उस पर है। इंडस्ट्रीज देखेंगे अच्छी स्टेट है, 27% से 29% वो क्या, मगर ये जो सेक्टर है इस पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और इसी की वजह से ओडोप हो या और भी जो प्रोडक्ट्स है उसको काफी बढ़ने की वजह से इस पर काफी फायदा होने वाला है। सर्विसेज और एक चीज मैं कहूँगा, इंडस्ट्रीज आप सबको पता है, एक इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से देयर कैन बी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, आपका मल्टीप्लाइजेशन हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जॉब एम्प्लॉयमेंट होती है, एंड इन द लॉन्ग टर्म इट हेल्प्स। सर्विसेज सेक्टर जो है मोस्टली, मगर इस पे क्या सर्विसेज सेक्टर होता है 2 जगह पे मोस्टली आप हो जाएगा, एक हो जाएगा हेल्थ केयर वगैरह या और आईटी सर्विसेज हो जाती है। आईटी सर्विसेज ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जो है मोस्टली प्रोग्राम टू नॉर्दर्न यूपी, जो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया वहां पर है, मगर इफ यू कम टू द वेस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ यूपी इतना नहीं है, जहाँ पर काफी प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज है, स्पेशली इन पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी आप कह सकते हैं। अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे देखिए खास बढ़ावट नहीं हुई है, बट एज आई जस्ट नाउ टोल्ड देयर कैन बी अ ह्यूज पोटेंशियल।
ऑलमोस्ट 10 बिलियन से लेके अराउंड जस्ट 16 बिलियन तक ही यूपी का एक्सपोर्ट्स हुआ है। यूपी डिस्पाइट दैट यूपी इज द 4th to 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। One more thing why this shows little dip and what minister was actually honorable minister was saying, because many of the products get classified from Delhi or different other cities because UP being a landlocked city, so then that becomes another slight verification होता है, मगर तब भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसको भी ऐड कर दो, मगर बेसिकली 6 बिलियन का ही पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुआ है, which can has a huge potential to increase further। क्या आइटम्स जाती है एक्सपोर्ट में, ये आती है विदेश में, कहाँ का यूएसए यूएई ये सब जगह भी जाते हैं। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जान दूँगा, आगे मूव करूँगा। हमने एक स्टडी हम लोग किए थे यूपी में, से मैडम कह रही थी कुछ महीना पहले, और उनमें हम लोग देखे हैं कि जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है यूपी का, वो आज के दिन में करीब $12 बिलियन का डेफिसिट है, तो अगर टेस्ट कर जाता है तो करीब 29 बिलियन यूपी का एक्सपोर्ट्स हो सकता है, जो आज के दिन में 16 बिलियन का आसपास है। So there is a huge potential of UP having increased its exports over a period of time. तो ये जो गैप है, इसको हम नलीफाई करने का कोशिश करेंगे, और आई एम श्योर इन द नेक्स्ट years to come this will be definitely be tapped in. This is the last area which I am going to focus on, which I actually mentioned a while. There are 3 areas and you cannot neglect: agriculture, industry and services. All 3 has to go in tandem. All 3 has to come together to work out a UP's increase exports from UP actually. तो उस पर आप देखेंगे कुछ चीज़ों को जैसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि क्यों किसी भी, अगर यूपी को इन दिस केस सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट यूपी, आई विल कंसंट्रेट ऑन यूपी, जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल आउटसाइड। ये नहीं कि विदेश में डिमांड नहीं है, मगर कुछ आइटम्स है जो हमको पता नहीं होती है। आपको शायद पता होगा कि, या आप सुने होंगे कि हम लोग काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको साइन करते हैं। आज इंडिया काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान जो 10 कंट्री को मिला जुला के होते हैं, या साफ्ता इतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जापान, साउथ कोरिया यहाँ भी हुआ है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स उनको पता होना चाहिए या पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। अब ये बात भी हो सकती है गवर्नमेंट को भी थोड़ा, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को भी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई एंड टेल द एक्सपोर्टर्स कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। आज के दिन में अगर हम यूरोप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी सामान जो यूरोप एक्सपोर्ट करेंगे वो शायद ऐसा आसियान या वियतनाम में शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हम रूल रेगुलेशन को सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं, तो उसके वजह से हमारा काफी फायदा हो सकता है। ये नहीं कि हमारा नहीं है। आज के में शायद कुछ दिन पहले की बात है, शायद हमारा बिहार या यूपी से हमने आम वगैरह यहाँ से यूरोप में एक्सपोर्ट किए थे। दैट वाज इन क्वाइट अ बिग न्यूज। सो इवन कॉमर्स मिनिस्टर वाज एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट इट। सो दैट मींस देयर इज अ पोटेंशियल, जस्ट दैट हमको मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना चाहिए, क्या चाहते हैं वो लोग, तो वो हमको पता होना चाहिए। उसके हम एग्रीकल्चर, इसका मैंने पहले ही बात किया कि काफी ज्यादा पोटेंशियल, ये नहीं कि हम उसको नजरअंदाज करते और इंडस्ट्रीज को काफी बोल से उसको भी लेके काफी वैल्यू चेन जिसको हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसका वैल्यू चेन को क्या प्रोडक्शन ला सकते हैं, फिर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एंड देन वी कैन हेल्प देम टू गो टू डिफरेंट मार्केट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ऑलरेडी मेंशन दैट काफी ऑफ द होम टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है, हम लोग टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। अब होम टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल, इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी अभी जो पीएलआई स्कीम लाया, प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस पीएलआई स्कीम में होम टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे डाले हैं। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट वी शुड एक्चुअली बी लुकिंग एट। ऐसे यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उस पे मतलब नॉर्थ साउथ, मतलब एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंपनी व्हिच कैन डू इट, which actually can be looked into by diversifying into other areas. तीसरा जब कैपिटल गुड्स, जिसको हम लोग हाईटेक एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। अब देखिए हाईटेक एक्सपोर्ट्स हमारा आज के दिन में टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हम काफी ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज जब ये मौका मिला है, या अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़े, कोविड की वजह से थिंग्स आर चेंजिंग टू सम एक्सटेंट, and if India is trying to improve itself, ये एक मौका है, then we start diversifying ourselves to product manufacture। यूपी ऐसा एक स्टेट है जो कोशिश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कि हम कुछ और बनाएं, तो why not start producing high tech। और जैसे पहले बता रहे थे, हाई टेक के लिए आपको समुद्र के किनारे होने की जरूरत नहीं है। इट्स इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, द प्लेस एग्नोस्टिक। इनफैक्ट देयर इज वन प्लेस कॉल्ड चेंगडू इन चाइना, जहां पर आपको पता चले कि इट इज अराउंड 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाई टेक प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ चाइना। तो आज अगर यूपी में हाईटेक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना सकते हैं, मोबाइल फोन्स बनाना जिसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, अगर यहाँ बनाने स्टार्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर कर्नाटक में बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। सो ये एक तरह से एक पोटेंशियल है जिसको हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर, आपको पता है कि अगर हम
आज के दिन में टूरिज्म का बात सोचें, बनारस दिमाग में आ जाती है, ताज आ जाएगी, आगरा आ जाएगी रादर, मगर देयर इज सो मेनी अदर्स। तो अभी गवर्नमेंट अभी कोशिश भी काफी कर रही है, देव दीपावली और भी काफी इस तरह का प्रोग्राम जो कर रहे हैं इसको और थोड़ा, जैसा गया के आज बिहार में आपको देयर टू स्टेट्स व्हिच टू प्लेसेस वेयर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स गो, one is Patna and other is Gaya, because people from Thailand and all directly fly to Gaya. So there are places, once things get improved, उसका geography improve कर लिया जाता है, it's more amenable to place. आपको देखिए सारनाथ, it's been to that place, it's so very good, clean. So if those things have matters, so as these things are taken care of, tourism can, because tourism is one can a very foreign exchange earn कर सकते, the state can earn foreign exchange from it. आपको डॉलर रुपी से बाहर आपको मतलब कमाने का मौका मिल सकता है, तो दैट्स आल्सो वेरी थिंग। तो एसेंशियल 3 आइटम पर मैंने यहाँ पर फोकस किया है। लास्टली ऐसा है सेइंग इन दीस फ्यू थिंग्स व्हिच आर गवर्नमेंट का फोकस में, हमने मैंने शायद क्रिएट ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 साल पहले, जिसको ज्यादा टेक ऑफ नहीं किया यूपी से। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इट्स द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर इनटू जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो जाके इसको क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, ज्यादा इसको मार्केट नहीं हुआ, दैट कैन बी लुक्ड इनटू। फिर कोल्ड स्टोरेज के बाद जहाँ पर मैंने किया हूँ, यहाँ पर क्या है कि उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो स्टेज पे काफी है, काफी नुकसान होती है, काफी बर्बादी होती है, उसको अगर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, गवर्नमेंट अच्छे से बनाए, तो इस पे काफी फायदा हो सकता है एक्सपोर्ट्स के लिए, दैट कैन बी गुड पार्ट ऑफ इट। एसपीएस इज साइटोसैनिटरी और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जिसको मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हर प्रोडक्ट हर जगह पे नहीं जाती। तो अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आज यहाँ से म्यांमार बाजू में भेजना चाहता हूँ, या वियतनाम भेजना चाहता हूँ, या जाकर यूरोप में कहीं भेजना चाहता हूँ, तो वो लोग चाहते क्या है? हम लोग तो सब बना लेते हैं, मगर वो क्या चाहते हैं, हमको वही बेचना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, अगर हम चाहते तो बहुत चाहते जाने के लिए, नहीं तो हमारा हमेशा रह जाएगा कि हमको यूएसए भेजना है और लंदन ही भेजना है। सो देयर आर अदर मार्केट दैट वी हैव टू टैप इनटू। स्ट्रेंथनिंग क्लस्टर्स, द क्लस्टर्स प्रोग्राम है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज का अंडर में आते हैं, और काफी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है which can be actually tapped into, or they can be created by the government of India, there can be public private partnerships in that clusters, and of course financing मिल सकते हैं। इसके वजह से at one place you can produce and multiple things and sell up to market. So this is a slide which मेरा थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे लगता है ये सब कुछ सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है जिसपे काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आज के दिन में आप सोचेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब अगर करना दूसरे स्टेट्स बनाने से पहले अगर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करता है, तो इस पे काफी ज्यादा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने का चांसेस है। अब ईवी के देखिएगा, काफी स्टेट्स कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। अगर आइदर आप रोड टैक्स पे इंसेंटिव मिल जाता है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोड टैक्स पे 25% डिस्काउंट मिलता है, ऑफ मिलता है इफ यू प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, वेयर इज इन अदर स्टेट्स ऑलमोस्ट 50%। तो एक इंसेंटिवाइज करने के लिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट मूवर आप जो करना चाहते हो, इन फैक्ट नॉट ओनली दैट यू कैन आल्सो गो इनटू प्रोड्यूसिंग दोस। अब देखिए इथेनॉल एक काफी आजकल बात चल रही है, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग आफ्टर महाराष्ट्र। आस्ते आस्ते गवर्नमेंट बोल रहा है इथेनॉल पे चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इथेनॉल में आप अगर करते हैं तो उसके काफी फायदा होने वाला है। तो गवर्नमेंट उस चीज को भी देख रही है। तो ये सब कुछ अलग चीजें जो हो रही है, उस पर प्रोड्यूसर जो है, हमने जो बिजनेसमैन है उत्तर प्रदेश का, ये कुछ और सेक्टर्स पे भी देख सकते हैं। सिमिलरली सोलर, अब रूफटॉप सोलर उत्तर प्रदेश में हर जगह पे नॉट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, सो हैविंग रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं सोलर चाइना से, अब खुद प्रोडक्शन करने लग जाए, ऑफ कोर्स कॉस्ट इज वन बिग फैक्टर, मगर ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल कम डाउन, एंड सोलर प्राइसेस हैव कम डाउन इन लास्ट 10 years सिग्निफिकेंटली। सो ये कुछ और एक सेक्टर जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में पहले बता रहे थे, टेक्निकली जियो टेक्सटाइल्स के बारे में, हाईटेक प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में मैं थोड़ा कवर कर चुका हूँ पहले, और टूरिज्म ये भी मैं कवर। तो ये 4-5 जो सेक्टर्स है बेसिकली नॉट, इट मे नॉट हैव एन इमीडिएट एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, बट व्हेन इट प्रोड्यूस्ड इन वॉल्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट यील्डिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स फॉर द स्टेट। ये ओडॉप है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने आइडेंटिफाई किया है across places. This is something that over a period of time might help, but it will take time, but definitely there is a big initiative, because हर स्टेट में इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में हर जगह पे कुछ ना कुछ खामियां है, कुछ भी अच्छा ही है। जो अच्छा ही है उसको अगर हम उसको प्रमोट करें तो काफी अच्छा इसमें तरक्की हो सकती है। ये जो जीआई बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर,
इसके वजह से हमको काफ़ी, जैसे लखनऊ के आप यहीं पर है, बनारसी साड़ी है, भदोई की हैंडमेड कारपेट्स है, ये सब चीज़ों की काफ़ी डिमांड है ओवरसीज। इनफैक्ट यूरोप जैसे कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हैंडक्राफ्ट और बनारसी साड़ी का फेमस है। तो दीज चीज़ को आप किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है आपका सामान कितना बाहर जा पाता है। इसी के साथ मैं बता दूँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू। Request him first present on his behalf. Then I will tell you about the Chief debt and technical assistance. Thank you. So please start. Amit also please start. Amit also please start. इसको बड़ा करिए।
Okay, there is some technical problem, but anyway, then I will go with my presentation, and during this time they will again try and to see if the connection is possible. Okay. हमारा presentation. Audible? Audible now. Yes. Yeah, सुनाई देता है. Yeah, okay. Thank you for inviting me to make a presentation of the Sitaare Fund. Thanks to the organizers and thanks to the participants for having patience to hear me out on this. Just start off right away on this presentation. I'm Amit Paul. I represent City Venture Capital Limited, which is a fund manager, a venture capital fund manager, and we are the fund managers for the Ubharte Sitaare Fund, which is category 2 SEBI-registered alternative investment fund for emerging exporting champions. And so the genesis of this fund was laid in the state where she proposed that floor may be set up, anchoring by Exim Bank and SIDBI, and part of that would be used for setting up, providing equity support to companies which are in which want to increase their exports. Maybe they are from various sectors such as pharma, auto component, and others. And this would have, of course, 3 components. I'm sure the honorable participants from Exim Bank and SIDBI would have briefed you or would be briefing you about the debt component and the technology upgradation and the handholding component. So I will basically try and brief you about the equity part of this. So as we see, this is about the overall scenario of India and global trade, where by figures that we have from World Trade Organization and others, we see that India is only a very small portion of world trade, only about 2%, which is skewed. And we of course all of us know about how China has been performing. China is much better. India, we all know that we can do much better in global trade, and that maybe the Ubharte Sitaare Fund is a step in that direction to enable kickstart this process. We have a long way to go. This gives a small scenario analysis of the fund's identified sector, the exports of the fund's identified sectors so far, and what it can achieve in a business as usual scenario and in an optimistic scenario by 2020. So we can see that it is about 266, should go up to 339 in business as usual scenario, and in an optimistic scenario it should be about 2020, and then 2026 it could go up to $537 billion. Now, the way that we have structured the fund is that it's a 250 crore fund with a green shoe option of another 250 crore, which could mean a target corpus of about 500 crores to invest. And investments would typically be in individual SME companies with an average ticket size of about 25 crores, where a minimum ticket size could be in the region of 15 crore and maximum could be in the region of 40 crore. That's what the thought process is right now.
we expect to end up making about 20 investments from this fund all over the country. All over the country, and the investment could happen in various tranches. So if the commitment is say 15 crore right now, maybe 2 years down the line there could be another tranche of another 10 crores, depending on the requirement of the investing company at that point of time, and also the fund's own internal perspective of further investment at that point of time. The fund expects to, invest for various purposes, and those purposes could be capital expansion. They could be, capital expansion, basically capital equipment, or acquisition or M&A financing, technology upgradation, product development, marketing and business development, which is, I guess, would be a very important component of exporting companies, new market entries, which is another expenditure which is generally not funded. These kind of things may not find favor with banks. Working capital, of course. These are some of the possibilities that the investment from the fund of the Ubharte Sitaare fund could we could look at. What are we looking for in the target companies? Of course, high scalability and we need high entrepreneurial drive and ethical leadership from the promoters. The large addressable market size of the product services addressing. Technology-driven business models is something that keeps the company at the forefront. We are looking at typically existing revenues in the range of 50 crore to 500 crore of those companies. Generally, minority stakes is what the fund looks at taking by way of its equity investment. The fund is looking at an investment period of 3 to 5 years, which basically means that we would like to start exploring exit options after 3 years, and look at full exit within 5 years' time of making the investment. The exit paths for the fund, first option would be, of course, an IPO, then a strategic sale, and then another option would be sale to other financial investors who can buy out the Ubharte Sitaare fund, put in more money maybe later, depending on the requirements of the company, and take the company to the next level. So these are some of the focus sectors of the fund. As we can see that we are, of course, we are looking at software services and technology, even software products, which is doing very well, of course, from India. We are looking at agri-tech, which is coming up, and if we find exporting companies which are there, most welcome. Consumer branded goods, basically consumer brands, is of interest to us. So maybe those brands could be in any sector. They could be in apparel, they could be in processed food, they could be in electronics, whatever. They could be in pharmaceutical. So branded and consumer goods could be across the spectrum of sectors. Another focus area is electronics. Then, of course, auto ancillary, light engineering, pharmaceutical, medical devices is something that the fund is very interested in, along with chemicals. We are also looking at fintech and edtech, as well as food brands. Food brands would, of course, get covered as a subset of consumer brands that the fund would be interested in investing. This is just to give you a brief idea of the entire investment process. Typically, it's a much longer time frame than comparable, because it starts with a preliminary screening on receipt of the proposal, the application from the company's side. This is followed by a detailed evaluation, internal evaluation, and internal discussions with the company and the management of the
the structure of the deal, where various parameters are discussed, such as what would be the amount of investment, what would be the valuation, what would be the instruments by which the fund would invest. The instruments would typically consist of instruments such as equity shares, preference shares, or debentures, or a combination of all. Then it requires approval of the investment committee, our investment committee, where the management of the company is invited to make a presentation directly to the investment committee. And upon investment committee approval, this is followed by due diligence by an external firm of chartered accountants, followed by documentation, legal documentation, which is basically execution of shareholders' subscription agreements and other ancillary documents. This is then followed by actual investment, disbursement by the fund into the bank account of the company, especially open bank account of the company. And this process from preliminary screening to investment generally takes 4 to 5 months, out of which the most time frame is taken up by the external due diligence and documentation. And after the investment is when we would typically like to be on the board of the company and nurture the company, help the company to expand further, create new markets, new products, and new customers, expand financially, improve revenues, profits, market share. After which, as I said earlier, 3 to 5 years is the exit time frame for the fund. And that is when the fund would look to exit its holding in the company to maybe another investor or offload through an IPO. These are the modes of investment. As I said, these are the instruments that the fund generally utilizes for making its investment, and they comprise of either one or all of them. So equity shares would definitely be one of the instruments that the fund would use. In combination with equity shares, the fund could also look at investing through compulsorily convertible preference shares, optionally convertible redeemable preference shares, compulsorily convertible debentures, and optionally convertible debentures. And this is worked out during the deal negotiation phase, depending on the requirements of the company and what the fund is also comfortable with that. So during the discussions, we arrive at a suitable deal structure for investment in a particular company. This would generally be different for each investment and would be tailored to the needs of the company at that particular point in time. So there is no loan. There is no loan or debt that is provided by the fund. We do not provide loan or debt. Some of the key investment terms that the fund will follow, which we will have executed, if we will have suitable clauses in our share subscription agreements, would be option of nominee director on the board of the company, nominee director to be appointed by the board of the investing company. Some affirmative voting rights with respect to capital raise, auditor appointments, expansion, diversification, and fee management appointments. Information rights with respect to monthly MIS reports. The fund would require monthly MIS reports and information of effects affecting the business. So a brief write-up on the monthly developments on the business. And some other terms such as right of first refusal or right of first offer, which basically provides the fund with the privilege to participate in any new equity offering that may happen after the investment by the fund. So today, if the fund is, Ubharte Sitaare fund is invested, say 15 crore in a particular company, and 2 years down the line, there is the company needs to raise further rounds of funding, then it would have to offer it first to Ubharte Sitaare fund, invite Ubharte Sitaare fund to invest that money. If by any reason the fund is unable to invest, then it can be offered to new investors to invest in that. Anti-dilution rights basically shield investors' percentage stake in the company. And exit, the fund typically will have exit options, which start with first of all an IPO, followed by a strategic sale or sale to other financial investors.
And if that doesn't work out, then other options such as put option or buyback. Generally, there is also a liquidation preference clause in the fund documentation, which basically is about again protecting the fund's investment. At least a minimum capital should be returned. That's what the liquidation preference talks about. How will we help you to grow? So, these are some of the things that the fund will do. Typically, the board observer or the nominee director alongside the board of the company will work to first of all improve corporate governance, appointment of proper auditors, beefing up the HR, the team at the company, participating in strategic decision making. So we would just like to point out that we do not partake in day-to-day decisions, but our participation is at the board level, and the whole purpose of that participation at the board level is to strategically prepare the company for its growth, enable growth at the company, to take the company to the next level. We will participate in major decision making by the company, such as entering new markets, launching new products, large orders, whether we should take those orders, how to finance those large orders, any fundraising that is required by the company, whether by way of debt or equity in future, is where we come in and help out for the management. Just to give you an idea of our sponsors, and I'm sure you would of course have learned about this already. The Export-Import Bank of India and the CDB are the sponsors of this fund, the Sitaare fund, as a part of the overall Sitaare program. And the fund has been set up with sponsorship from
देखे हुए हैं जो वहां पर हमें लगे कि एक्सपोर्टर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस। सो बेसिकली आप जो इसमें देख रहे हैं बस स्नैपशॉट ऑफ आवर एक्टिविटी विच वी हैव डन। वहां पर दोनों प्रोग्राम में हमें ज्यादा सबसे बड़ा हमारा एक आप लोगों से शिकायत मैं बोलूं तो अगर गलत ना हो कि एक्सपोर्टर्स ज्यादा आए नहीं प्रोग्राम्स में। डिस्ट्रिक्ट में हम चले गए बट वी ओनली फाउंड ओनली 50 to 60 exporters coming to our program. Anyhow, it could be due to some communication or तो execution का issue हो गया होगा। We will make sure कि अगले programs में वो चीज ना हो। So जैसे कुछ questions था आप देख सकते हैं कि how to get product approval for export। अगर मैं एक मैडम यहाँ बैठी हुई थी पीछे, उन्होंने पूछा कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ चिकन का, लेकिन मैं कहाँ एक्सपोर्ट करूँ अपना प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूवल कैसे दिलाऊं जिससे मेरे को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता मिल जाएगी। एक ऐसा बहुत जेन्युइन मेरे को क्वेश्चन लगा। ये क्वेश्चन हमको वहां के एक्सपोर्टर्स ने भी पूछा कि हमारे पास प्रोडक्ट है लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो अप्रूवल मिल सकता है क्या स्कीम के अंतर्गत। एंड सिमिलरली मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं अपना बिजनेस एनहांस करना चाहता हूँ। अब मैं शायद अभी एक आध कंट्री में या एक रीजन में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ बट आई वांट टू कैप्चर द एंटायर ग्लोब। जैसे यूरोप में कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लैटिन अमेरिका साइड चले जाऊँ या फिर मैं चाइना के जितने भी और कॉम्पिटिटिव हैं म्यांमार चले जाऊँ, साउथ अफ्रीका चले जाऊँ, तो वहां कैसे जाऊंगा, मेरे को एनहांस करना है। तो क्या एक्सिम बैंक और सिडबी मेरी किस लेवल पे सहायता कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं, हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू get connected with Ubharte Sitaare program. So these are some questions which came from your side only. मैं your side इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप ही के द्वारा एक्सपोर्टर द्वारा पूछे गए कुछ सवालात हैं। सिमिलरली अगर मैं उभरते सितारे के लिए अप्लाई करता हूं तो व्हाट आर द बैंक गारंटी विच इज रिक्वायर्ड टू अवेल द लोन और फैसिलिटीज। बैंक गारंटी लगती है, अगर लगती है तो किस टाइप की लगती है, हु आर व्हाट काइंड ऑफ बैंक गारंटी इज रिक्वायर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। एंड और भी लोगों ने बहुत सी अपनी दिक्कतें बताई कि जैसे उनको ट्रेड बैरियर्स फेस करने को मिलते हैं, जब ट्रेड करने जाते हैं तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, तो वहां पर क्या कुछ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन हम एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा प्रपोज कर सकते हैं, शासन को जाके बताएं कि एक्चुअल में एक्सपोर्टर्स को ये दिक्कत आ रही है। तो ऑन सिमिलर काइंड ऑफ नोट ये देखिए ये आने वाले प्रोग्राम का शेड्यूल है जो हम करेंगे। तो अगर आपके जो दोस्त वगैरह होंगे या फिर आपके कलीग्स होंगे जो इन जिलों में रहते हैं तो काइंडली उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर सर्कुलेट करवाइए। जहां तक हम चाहते हैं कि एक्चुअल जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं इस 10 प्रोग्राम 12 प्रोग्राम के बाद, वी नीड नंबर्स कि इसमें से हमको अगर 100 लोग भी मिल गए जिन्होंने उभरते सितारे प्रोग्राम को लिए अप्लाई किया और यूज किया और किसी ना किसी भले इक्विटी या डेट में या फिर टेक्निकल असिस्टेंस लिया उसका, तो हम इस अपनी कवायद को जो हम जिला लेवल पे जाके कर रहे हैं हम सक्सेस मानेंगे और उसी के साथ साथ आगे पूरे 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में कवर करेंगे। ना मैं सिडबी और एग्जिम बैंक की तरफ क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ता हूँ। अगर अभी हाउस में अगर है किसी के जो अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन, जो भी लगता है आपको। ओके, थैंक यू। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज द स्कीम, फ्लैगशिप scheme for exporters, but besides that also SIDBI has a lot of other schemes, okay, for normal schemes where exporters can take an advantage there. One is the RI scheme, or retail RIs. It is such a scheme that, you know, technology upgradation is one of the most critical area for a export oriented unit. Suppose you want some equipment and immediately you want some equipment, you go to the banks, you have so many formalities, but we have a RI scheme under which you have to just only give 25% of the in the form of FD collateral, and we will give you 100%. What is your requirements? And at a rate of 6%. Okay, this is one scheme I wanted to speak to you. Actually, really, there is a lot of takers. Many have come forward and they told that okay, we want immediately. Okay, it is a two page appraisal. Bus 6% you will take, 25% you will pay. Up to 3 crores, 25% you pay, and you take immediately the 100% we will pay to you. So this is one scheme also I told. Okay, thank you very much for listening.
थैंक यू सो मच सर। आपने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इनफैक्ट जो प्रेजेंटेशन बॉम्बे से हुआ था उसमें भी काफ़ी जानकारी मिली इस प्रोग्राम के बारे में। आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस शिवांगी सिंह, ACI डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैं प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए, उनके बारे में जानकारी देंगी। मैम शिवांगी जी। A very good afternoon to all of you. I don't have a formal presentation to make, a PowerPoint to present in front of you, so I'll try to make my talk more interactive. What I'm going to talk about is the policies and the schemes that the Uttar Pradesh government has to promote the exporters of the state. Now, as it has already been talked about here by the various speakers also and elsewhere also, that Uttar Pradesh has lots and lots of potential in terms of developing as the export hub of the nation. Now, when I say this, I basically want to let you know that not only because of the varied landscape that we have, but also because of a rich tradition of handicrafts that Uttar Pradesh has. Because of that, we can become the export hub of the nation. The only challenge that we face is that we are a landlocked state. Now, realizing these opportunities as well as the setbacks that we have as a state, the Uttar Pradesh government has come up with an export policy of 2020-2025. And this policy, why is it is very important? Because the very first thing I would like to share with you, it is in line with the foreign trade policy of the Indian government that they have recently launched. So initially what used to happen was, that central government had certain schemes and state governments had similar schemes, or some of the schemes or points, they were contradictory to each other. So taking care of these things, now this scheme, the recent policy that the Uttar Pradesh government has launched, it is in line with the central government policy which relates with the foreign trade. Now, the very first thing that I would like to share with you is all the schemes and the assistance that the Uttar Pradesh government gives to its exporters. They are all online. So all you have to do is log into the website epbup.in and you will find all the schemes that are there that are supported by the Uttar Pradesh government, and you can just register yourself and apply for assistance. Now, another thing that this policy is going to introduce is a dedicated GST cell for the exporters. Now, this was one very important drawback that the exporters were facing, that because GST issues were very much into a play, and they were having facing these hindrances as far as exports were concerned. So now the government has decided to have a dedicated GST cell for that purpose. Apart from that, the government has also made sure that not only the manufacturing but also the services sector will be tackled, and they will be given assistance if they want to export. Another thing that I would also want to share with you is that we are trying to develop an exporters database. Exporters database would not only help us as a government to analyze and realize where we need to pitch in more, but it will also give an edge to the other emerging exporters as to where they can export. For instance, we were also sharing when Mr. Majumdar was talking here, and he stated that there is a gap which Uttar Pradesh as a state has to address in order to become the a good export hub of the nation.
So in order to address that gap, this exporters database will also come in very handy. Why? Because it will have the information of existing exporters and also the potential markets which can be explored. Now, in line with this, I would also like to share with you that the Uttar Pradesh government has conducted, with the assistance from PwC, it has conducted a research study about the export ecosystem of the state. In this study, in this research study, what we have come up is we have identified the existing products that need more assistance in terms of expanding their exports. One. Second, we also have identified various other potential markets where these existing products can be exported, right? Thirdly, we have identified certain new products which are not being exported till now, but they can be exported to the existing markets. Fourthly, we have identified certain products which are not yet exported, but they can be exported to the potential markets. So these in terms of these four strategies, we are trying to come up with more focused and more appropriate strategies for the promotion of exports. Now, the entire idea for the Uttar Pradesh government is that we are trying to have a proactive approach to identify the bottlenecks and to boost the exports. Now, this study that I had just pointed out, it identified 100 products across 14 sectors. And we are on the verge of developing more focused strategies for the implementation of promotion of these products. Again, as an initiative and taking forward the idea and the vision of the Prime Minister of the nation, Mr. Narendra Modi, to develop each and every district as an export hub, we have, as in Uttar Pradesh government, we have introduced export development centers in 10 districts of Uttar Pradesh which have the most potential to develop as the export hubs. I can name a few. There is Varanasi, then we have Moradabad, then we have Bhadohi. So these kind of districts which already have the potential to become the export hubs, we have already developed an export development center. Secondly, each and every district, all the 75 districts of the state are now having export development committee under the chairmanship of the district magistrates of that particular district. Now, this export development committee, it has this task to address the problems of the local exporters and to identify the key gaps. So these key gaps can be identified at the local level, and then they can be escalated and they can be addressed at the higher level. Each and every district, we are making sure that has a district export action plan. Now, we all know that some of the districts, or majority of the districts have many products that are being exported. But the identity of that district is basically confined to one or two products only. For instance, if I talk about Lucknow, we all know that chicken curry products are being exported. We all know that mango, the Shahri mango is being exported. So these are the products that we already know. But there are also other products that are being exported from Lucknow. So we not only have to address the existing products that are already being exported, but we also have to take into our own cognizance that the other products that can also be exported or that are being exported and need more assistance. So the government is also addressing on that. Then more than 15 CFCs are under the process, that are the common facilitation centers. So 7 in the last years have already come up, and 15 more are in the process of being developed. So these CFCs will address the local issues and they will also help in the growth of the district as an export hub. Again, the Uttar Pradesh government is also focusing upon the skill development and capacity building of the exporters. Now, this wide-ranging policy, it addresses the institutional interventions as well as the infrastructural interventions. The schemes that we have, they have also been modified. Modified when I say, I would like to share with you that there are 3 major schemes that the Uttar Pradesh government has for its exporters. One is the market development assistance. Second is the assistance for freight charges
up to the gateway port scheme, and third is the air freight scheme. Now, if I talk about the MDA, that is the Market Development Assistance Scheme, let me share with you that till now, for participation in various international trade fairs, the exporters were given the assistance of 50% of the stall charges and 60% of the stall charges and 50% of the airfare that they were actually paying. Now, these charges were being reimbursed by the Uttar Pradesh government. But now this has been increased to the capping, which was initially 1,50,000, it has been increased to 2 lakhs and 1 lakh respectively. So the amount of assistance that was being given to the exporters has now been increased. Secondly, the nature has also changed. How? Initially, the scheme was addressing only the physical trade fairs that were being held. So if any individual was actually traveling to an international country, to another country in order to participate in a trade fair, the assistance was being provided. But now even international trade fairs with having the virtual medium, which are on the virtual platform, they will also be addressed. So once this geo comes in, we'll be able to be clear about the actual assistance that this scheme is actually giving. Now again, till now, the kind of certifications and other quality control issues that were being faced by the exporters, so the assistance was being given by the government. Now, initially, this was only related to the standards set by the Indian government, such as the BIS. Okay, so but now, in you take any kind of certification, it will be assisted by the Uttar Pradesh government. Similarly, if I talk about the gateway port scheme that I was sharing, so in the kind of assistance that was initially being given, it has also been increased in terms of financial assistance. Another thing that till now, the only medium by which the freight was being transported, it was by the means of containers. Now we have also introduced the medium of trucks, and even if an exporter from the manufacturing center tries to take his products to a gateway port by the medium of trucks, the assistance will be given. Again, if I talk about the air freight scheme, initially, only the air freight that was passed from the Lucknow and the Banaras airport, the Varanasi Babatpur airport and the Lucknow Amose airport, only those products were given the assistance with related to the air freight scheme. But now, if the exporter who has the products originated in Uttar Pradesh exports from any of the air cargo complexes across the nation, the assistance will be provided to them. So this kind of initiatives have been taken by the Uttar Pradesh government so as to address issues and issues faced by the exporters, which are in the present terms. So these are the recent developments that have occurred. For instance, initially nobody used to talk about or nobody used to think about virtual medium, but now it is an in thing. So the government tried to pitch in, and they have come up with and they have realized the importance of the virtual medium, and hence they have included this in the scheme as well. So these are the things that I wanted to share with you. In any query or any kind of assistance that you want to have from the Uttar Pradesh government, you can always visit the Export Promotion Bureau, which is in the Kaisarbagh, our office, or you can also log into our website, which is epbup.in. So thank you for having me here, and I would like to address any questions that you all have. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच ऑल आवर पैनलिस्ट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हमारे यहाँ जितने एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, आई एम श्योर उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी इस स्कीम के बारे में, उभरते सितारे के बारे में।
We do have a dedicated question and answer session, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग सब तब तक रहें, बिकॉज हमारे गेस्ट रहेंगे उस दौरान, तो उस दौरान आप बाकी सारे सेशंस भी देख सकते हैं, एंड देन आप एक जो आपके जितने भी मन में सवाल हो एक साथ हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे पूछ सकते हैं. I would like to invite our CEO Dr. Ravi Gupta, जो हमारे पैनलिस्ट को एक छोटा सा मोमेंटो गिफ्ट करेंगे ताकि उनके लिए ये यादगार रहे कि वो आज यहाँ पे आए थे. To Miss Meghna Jotekar. To Mr. Rahul Majumdar. To Mr. Shrikant Das. To Ms. Shivangi Singh. मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि सर से एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए. Thank you so much to all our panelists. In fact, this has been a very enriching session. मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स और MSME से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए काफी लाभकारी रहा होगा. अब हमारा अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जस्टिफाइंग द लॉन्च ऑफ उभरते सितारे प्रोग्राम, द रोल ऑफ ODOP इन स्मूथली रोलिंग आउट द फंड इन द स्टेट. And I would like to invite Shri Gaurav Srivastav, Senior Consultant, Ernst & Young Global Consulting Services, and Shri Hassan Yaqub, Chairman E-Commerce Council, CII UP, and Associate Director Group, Flipkart. The session will be moderated by Dr. Ravi Gupta. So this session is about justifying the launch of Ubharte Sitaare program, the role of ODOP in smoothly rolling out the fund in the state. Over to you, sir. Namaskar everyone. बहुत बहुत धन्यवाद to each of our speakers and each of our delegates. And just to inform you all that this session is being telecast live across YouTube, Facebook, and LinkedIn, and it's also being telecast on the MSME department handles also of UP government. So we have a much wider audience besides this hall. So it's a pleasure to have with us two eminent speakers here. We have Mr. Hassan Yaqub, who is the chairman of E-Commerce Council of CII UP, and he's also the associate director of at Flipkart Group. Welcome, Hassanji. Thank you. And we have Shri Gaurav Srivastav, who is a senior consultant, Ernst & Young Consulting Services, EY. Welcome, Gaurav. Thanks for joining me. So let me request to start with Gaurav Srivastav, who is working closely with the department of MSME, and also he has been associated with the ODOP program in a big. So I request him to give his address, and if you would wish to join on the stage, you can. Gaurav. Thank you, Raviji. Thank you for providing me this opportunity to talk about ODOP. Good afternoon to everyone.
ओडीओपी पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि सुबह से आप लोग बैठे हैं और ये लंच टाइम हो रहा है, तो शायद हमारे लेक्चर्स आपको इतने अच्छे ना लगे, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे। और ओडीओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग हियर, either someone is from the media person, someone is from maybe a business background, or maybe someone from some consulting firm or any job related thing, because ODOP is a very unique program. It started in 25th January 2018 by our CM itself, and it's a flagship program of Uttar Pradesh government. The idea of the ODOP scheme is to we have 75 districts in UP, and each district is having a unique product. In terms of, if I'm talking about the product, like in Lucknow, people are aware the chicken curry product is here, Kannauj it, Banaras silk sari. So we already have so many products in our state, but the problem is that the ecosystem is not that much, you can say, mature level. So the artisans are not getting that much, you can say, in terms of the money, in terms of exposure. They do not have the access to the finance, access to the market. So UP government understand this problem, and they decided they will work on the ecosystem on the each district on this particular product, so that the whole chain is going to be sustainable and nobody will go to the outside for the work. It's a kind of जो अपना पीएम का एक है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का एक जो मेन उद्देश्य यही है, ये नहीं कि एक कोई कंपनी लगाए और 100 लोगों को नौकरी दे, एक कोई खुद से काम करना स्टार्ट कर दे। एज अ आर्टिशियन भी अगर खुद से काम छोटा मोटा काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे, स्टिल इज सेल्फ सस्टेनेबल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली 57 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे। कैन आई हैव माय प्रेजेंटेशन प्लीज? Out of 75 district, we identified initially 57 products, 57 unique products, because some products are common in some district, like मूंछ का product सुल्तानपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, चिकन कारी 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो 57 यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे। अभी वो 67 हो चुके हैं बढ़ के, और उस पूरी ये 57 प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किए गए थे, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इससे रिलेटेड एक डायग्नोस्टिक स्टडी हुई। इस डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए टोटल 6 एजेंसीज हायर की गई, और वो सारी एजेंसीज रिनॉल्ड एजेंसीज थी, लाइक एडीबी, पीडब्ल्यूसी, आईएलएफएस। तो ये 6 एजेंसीज को सारे 75 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किसी को 10 डिस्ट्रिक्ट था, किसी के पास 15 डिस्ट्रिक्ट था। इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर थे, वो चाहे एक आर्टिशियन हो, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, किसी भी तरह का उस इकोसिस्टम से रिलेटेड जो लोग थे, उनके साथ इंटरव्यूज लिए, उनसे 1-to-1 मीटिंग की, एक क्लोज रूम मीटिंग की, क्वेश्चनर के थ्रू उनके व्यूज लिए। तो जितने भी इनपुट्स उससे आए, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो समस्याएं थी, अगर मैं बात करूं काला नमक राइस की, तो अभी सुबह में मंत्री जी ने भी बोला कि काला नमक राइस को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। काला नमक राइस का जो बैकग्राउंड था लोगों को नहीं पता था, हिस्टोरिकल वैल्यूज नहीं पता थी। वो लूज में बिकता था, तो जिसको एरोमा था, उस एरोमा नहीं आ पाता था, अगर कोई और कहीं लेके जाता था, उसकी पैकेजिंग की दिक्कत थी। तो जो भी समस्याएं थी इस डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट में कैप्चर की गई, और इस डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट के बाद अर्न्स्ट एंड यंग EY ने उसका DPR बनाया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि उस जो कमियां थी, जो उस डिस्ट्रिक्ट के इकोसिस्टम में कमियां थी, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, चाहे डिजाइनिंग की प्रॉब्लम थी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे जो भी दरी बनती है, जो भी कालीन बनता है, मिर्जापुर में बनता है। आई थिंक जफर इज हियर, जफर मिर्जापुर में काम कर चुके हैं, तुम्हें पता होगा। तो मिर्जापुर में कालीन का सबको पता है एक्चुअली। तो लेकिन वो जो कालीन बनाते हैं वो इंडिया के मार्केट को ध्यान में रख के बनाते हैं, लेकिन जो सऊदी और इस तरह की कंट्री है, वहां के जो होटल्स होते हैं, वहां के जो प्रेमाइसेस होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उस लेवल की कालीन वो नहीं बनाते हैं। तो इस तरह के भी जो गैप थे, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिजाइनिंग चाहिए, क्या साइजिंग चाहिए, क्या पैकेजिंग चाहिए, इट वाज मिसिंग।
So we identified those gaps, and in DPR we proposed कि what intervention we can do that in terms of everything, कि क्या हमें technical intervention चाहिए, क्या हमें capacity building चाहिए, किस तरह का हमें infrastructure चाहिए, and उसको हमने फिर एक टोटल 4 स्कीम है, उनमें से एक स्कीम में कन्वर्ट किया। तो मैं अभी बताना चाहूंगा फेज 1 था। फेज 1 था, पहले हमने इस 75 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया क्लस्टर फॉर्म में, कि कोई लेदर का क्लस्टर है, कोई फूड टेक्नोलॉजी का क्लस्टर है, अलग अलग क्लस्टर हमने डेवलप किए जो एक ही जैसे इकोसिस्टम में इवॉल्व थे। फेज 1 में हमने ये काम किया। फेज 2 में हमने फिर वही जो आपको बताया कि जो 6 एजेंसियां थी वो 75 डिस्ट्रिक्ट में डायग्नोस्टिक करके डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनाई। फेज 3 में हमने क्या किया कि जो भी अब कमियां पता लग गई और क्या करना है हमें पता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक सीएफसी सेंटर का गठन करने का हमने प्रयास किया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आपको जो भी चीजें हैं, 1 A to Z सर्विसेज जो उस इकोसिस्टम को लेकर प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए डिजाइनिंग लैब की कमी है तो वहां पे डिजाइनिंग लैब देना, अगर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की दिक्कत है तो वहां पे किसी स्टोरेज बनाना, अगर किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है तो वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। वहां पे सीएफसी सेंटर का हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान किया 75 डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए। वो जो सीएफसी सेंटर होगा उसको रन करने के लिए 20 लोगों की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी गठित होगी जो उसको रन करेगी। वो 20 कम से कम 20 होने चाहिए, 20 से ज्यादा हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मेंबर्स चाहिए होंगे। वो 20 जो मेंबर होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट से किसी न किसी रूप से जुड़े होने चाहिए, और उस 20 लोगों को 10% उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगाना होगा। बाकी 90% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ओडीओपी बियर करेगा। लैंड एसपीवी की खुद की होनी चाहिए। इसमें प्रोजेक्ट जो साइज है वो मैक्सिमम कैप 15 करोड़ रुपीस है। इन सर्टेन केसेस वी कैन चेक, बट 15 करोड़ तक है। अगर 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में लगता है तो 1 करोड़ वहां के एसपीवी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 9 करोड़ गवर्नमेंट विल फंड, and the whole thing, the execution part will be taken care by the SPVs. Obviously we will do the monitoring and evaluation part, but the execution part will be taken care by SPVs. So in phase 3 out of 75 districts 22 CFC का काम स्टार्ट हो चुका है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काम चल रहा है। फेज 4 इज इम्प्लीमेंटेशन। एज मैंने बताया कि 22 डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हो चुका है, so we are in 3rd and 4th phase, and after that phase 5 monitoring and evaluation। मैं ये फेज 5 नहीं बोलूंगा, इस सब में होगा कि जो भी काम होता जा रहा है वो हम लोग मॉनिटर करते जा रहे हैं। टोटल 4 स्कीम है ओडीओपी के अंतर्गत। जब भी कोई बिजनेस करने जाता है तो उसको 3-4 चीजों की जरूरत होती है। जो सबसे पहली चीज की जरूरत होती है, अगर उसके पास आइडिया है, सब कुछ है, तो ही नीड्स मनी। और हम बात कर रहे हैं बेसिकली माइक्रो और स्मॉल सेक्टर की। ओडीओपी में जो हमारे आर्टिशियन है, जो 5 लाख 10 लाख या 15 लाख के बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको उतना भी बैंक के साथ मतलब वो नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, या उनके पास इतने एजुकेटेड लोग नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट नोट बना पाए या किसी भी तरह का उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाए, तो उनको बहुत दिक्कत होती है बैंक से लोनिंग लेने के लिए। तो ओडीओपी ने प्रोवाइड किया उनको मार्जिन मनी स्कीम। मार्जिन मनी स्कीम के तहत आप ओडीओपी की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, आपको हाईली सब्सिडी रेट पे आपको लोन मिलता है। ओडीओपी के अंतर्गत में 75 डिस्ट्रिक्ट के एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने नंबर से इतने करोड़ के लोन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो प्रोसेस होता है, पहले ऑफलाइन प्रोसेस था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे डीआईपी सेंटर्स थे, वहां पे जाके आपको फिजिकली करना होता था। अब हमारा ओडीओपी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वहां पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी होती है जो स्कैन करती है, उनकी वायबिलिटी देखती है प्रोजेक्ट का, उसके बाद वो बैंक को आगे फॉरवर्ड करती है। दूसरी हमारी स्कीम है एमडीए स्कीम, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। अभी जैसे दुबई फेस्ट होने वाला हो रहा है, बेसिकली यूपी का दिसंबर में है, इसके बाद अभी लॉस वेगास में भी होने वाला है। इस तरह के ढेर सारे फेस्ट इंटरनेशनल लेवल, इवन नेशनल लेवल पे दिल्ली हाट है, सूरजकुंड मेला है, होते रहते हैं। तो हम अपने आर्टिशियंस को, हम अपने इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनको अक्रॉस ग्लोब, नॉट ओनली इन यूपी, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मेला, प्रदर्शनी या किसी भी तरह का इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहां के आने जाने का एयरफेयर, अगर वो इंडिया के बाहर है, विद इन इंडिया है तो एसी 3 टायर या फिर एसी बस का आने जाने का, उनकी जो फ्री चार्जेस हैं, जो उनके कोई भी वो लेके अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसके फ्री चार्जेस हैं, प्लस जो भी वहां पे
एक चार्जेस होते हैं आपको अपने प्रदर्शन के लिए, आपके उसके प्रोडक्ट्स के लिए, स्टॉल चार्जेस, इन सारे का 75% गवर्नमेंट ऑडियो रिम्बर्स करती है, 75%। नाउ द थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग एंड टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी थिंग, और मे बी जो भी नए इंटरवेंशन आ रहे हैं, तो हम उनको जो भी इस तरह के अनस्किल्ड या एक तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जा रहे हैं, तो उनको हम 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस 10 दिन की ट्रेनिंग में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, पैकेजिंग, जो भी चीजें हम लगता है कि हमें मॉडर्नाइज की जा सकती हैं, वो 10 दिन की हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको पर डे के चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी अब जो भी उनकी पर डे की काम करते हैं छोड़ के आते हैं, तो पर डे का उनका चार्जेस भी होता है। 10 दिन को उनको एब्सोल्युटली फ्री एक ट्रेनिंग होती है, और 10 दिन के बाद में उनको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और 10th डे उनको एक टूल किट मिलता है वर्थ ₹20,000 करोड़ का, सॉरी 20,000 रुपीज का, जो कि उस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट होता है। अगर चिकनकारी का, तो चिकनकारी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, अगर कन्नौज का इत्र है, तो इत्र से रिलेटेड जो होंगे, 20,000 रुपए तक का एक छोटा टूल किट मिलता है, जिसे जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग दे कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट बिजनेस बाय देमसेल्फ। फोर्थ स्कीम है सीएफसी स्कीम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी गैप आइडेंटिफाई होते हैं, उसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाता है, और जो भी चीजें कमी रहती है डिस्ट्रिक्ट को, वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारी अभी हमने बहुत इस चीजों में बहुत लोगों के साथ डॉटेलिंग की है, बहुत कोलैबोरेशन किया है। हमने ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा के साथ भी हमारा चल रहा है। फ्लिपकार्ट के हासन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1000 करोड़ का, एंड 1000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 1000 करोड़ के ओडीओपी प्रोडक्ट ओनली फ्लिपकार्ट ने सेल किए। So, and it's a you can clap for this, for the ODOP, maybe Flipkart or maybe the UP state government. It's a big achievement for us. So ODOP के जो action points हैं, I already explained. So कि हमारा काम है कि जो भी अगर हमें लगता है कि किसी तरह की कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम है, तो ओडीओपी के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी पैंडेमिक आया तो बहुत से समीकरण बदले, बहुत से इक्वेशंस चेंज हुए, सो डू वी रियली नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन नाउ इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी एज वेल। सो वी आर डूइंग एज वेल कि जो भी हमें फीडबैक मिलते हैं स्टेक होल्डर से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, वी आर ट्राइंग टू चेंज द पॉलिसी एज वेल। एंड रिसेंटली पहले था हमारा जो 57 प्रोडक्ट्स थे, जब हमें पता लगा डिस्ट्रिक्ट के डीएम के थ्रू कि नहीं, इसके पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट उतना वायबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट को लेके, इससे बेटर प्रोडक्ट है, वी एडेड दैट प्रोडक्ट एज वेल। सो इट्स कीप चेंजिंग, इट्स नॉट अ रिजिड। देन इंप्रूविंग क्वालिटी, हमने क्या किया कि अभी जो भी ओडीओपी के प्रोडक्ट है, वी कैन नॉट से कि ये ओडीओपी का प्रोडक्ट है, कोई ले सकता है। हमने कोई जैसे आईएसआई मार्क होता है, एक मार्क होता है कि हम देते हैं कि आप इसकी आप तसल्ली कर सकते हैं। तो ओडीओपी में हमने डिसाइड किया, जो ये ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इन ओडीओपी प्रोडक्ट्स को कैसे एक लेबलिंग दे पाए, कैसे एक ब्रांडिंग दे पाए कि वो क्लेम कर पाए कि कन्नौज का जो बना रहा है उत्तर की, हाँ ये हमारा ओडीओपी का प्रोडक्ट है, या फिर जो साड़ियां हैं ओडीओपी प्रोडक्ट हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे हमारे पास। चैलेंजेस ये था कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पैरामीटर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं थे। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे कि क्वालिटी पैरामीटर हमारे पास रेडी नहीं थे। तो हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया QCI के साथ हमने MOU किया, उनके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स के या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए जाएं, जिससे जो उन क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करेंगे, हम एक ओडीओपी का एक लोगो, ओडीओपी का एक स्टैंपिंग देंगे, जिससे वो क्लेम कर सके कि ओडीओपी का प्रोडक्ट है। तो वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी पार्ट ऑफ द ओडीओपी प्रोडक्ट्स एज वेल। Okay, so I already explained the ODP margin money. I'm not going into the details because already you are guys exhausted. So now ODOP का जो स्कीम है वो बहुत हद तक सिमिलर है अलग अलग प्रोग्राम से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो, NRLM की जो SHGs महिलाएं करती हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमने देखा कि NRLM जो SHG महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उनकी लिवलीहुड पे जो काम कर रहे हैं, ODOP के बहुत से ऐसे आर्टिशन हैं जो कि SHG महिलाएं हैं।
we both are working on the same group, right? So we decided कि हम क्यों ना एक MOU करें और हम क्यों ना एक jointly कुछ काम करें। तो हमने NRLM के साथ एक MOU किया और हमने आइडेंटिफाई किया 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कि जो SHG महिलाएं हैं जो ODOP के प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं वो NRLM के रजिस्टर्ड SHG मेंबर्स हैं, हम उनको एक तरीके से हम उनको प्रायोरिटी पे अगर MDA स्कीम है, मार्जिन मनी स्कीम है, ट्रेनिंग है, उनको हम प्रायोरिटी पे करके देंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द NRLM, वी कैन ट्रैक देम एंड वी कैन प्रोवाइड द फैसिलिटीज एक साथ। जैसे अगर हम इंडिविजुअल किसी को बुलाते हैं, SHG महिलाओं को बुलाते हैं, तो उनको लाने के जाने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी। एक बॉडी रहेगी तो बॉडी उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। अभी तक हमने 1000 से ज्यादा जो SHG महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, उनको टूल किट वितरण करा चुके हैं, लेकिन जिस जगह तक कोविड अभी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें रुकी हुई थी। कुछ हमारे हाइलाइट्स हैं, जैसे कि अभी तक हम 22 CFC पे हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट जो है वो अगर आप देखेंगे तो 1920 में ऑलमोस्ट 35% इंक्रीज किया था एंड 35% इज अ बिग अमाउंट। देन अभी तक हम लोग 41,000 ODOP के आर्टिशन को ट्रेन कर चुके हैं, 40,000 टूल किट हम प्रोवाइड करा चुके हैं और जितने लोगों को हमने ट्रेन किया, टूल किट प्रोवाइड किया है, हम ये मान रहे हैं कि वो एक छोटा बिजनेस खुद का स्टार्ट कर चुके हैं। इवन इफ यू आर चेकिंग 50% बिकॉज हमने उनको टूल किट भी प्रोवाइड दी, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड दी है, तो उसके माध्यम से कम उनको एक आजीविका का साधन मिल गया। फिर हमारे 15 ऐसे ODOP प्रोडक्ट हैं जो कि GI टैग हैं और 10 प्रोडक्ट जो हैं पाइपलाइन में। GI टैग के बारे में मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की एक क्रेडिबिलिटी बनती है। जैसे इंडिया में दार्जिलिंग टी सबसे पहले हमारा GI टैग था। अब इंडिया में कहीं पे भी दार्जिलिंग टी कोई खरीदेगा GI टैग का तो वो श्योर रहेगा कि ये हम ओरिजिनल खरीद रहे हैं। आप अगर आप आगरा में जाएंगे तो पंछी पेठा है, पेठा आप कहीं से भी लेंगे आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मथुरा में आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पेठे की शॉप है, पेड़े की शॉप है, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए जो एक ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है जहां का जो प्रोडक्ट अच्छा है उसको GI टैग बोलते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी 57 या 67 जो प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट हम GI टैग प्रोवाइड कराएं जिससे उसकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन अक्रॉस ग्लोब रहे। अगर हमारी चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी कोई US में खरीदता है, यूरोप में खरीदता है, किसी दूसरी कंट्री में खरीदता है, तो कोई डाउट ना रहे कि ये कहीं ये फर्जी तो नहीं है, कहीं ये फेक तो नहीं है, तो वो GI टैग पे हम काम करें। 15 प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी GI टैग हो चुके हैं, 10 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बाकी प्रोडक्ट पे हमारा काम चल रहा है। देन अब तक टोटल 3000 ऐसे आर्टिशंस हैं जिनको हम 1,000 करोड़ के 100 करोड़ के लोन हम लोग अभी ODOP के अंतर्गत प्रोवाइड कर चुके हैं और टोटल अभी 9 से 10 हम ODOP सबमिट कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ लास्ट 2 years इट वाज नॉट फिजिबल फॉर अस, नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मैं कहना चाहूंगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमें बहुत फायदा हुआ है। जो भी हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया, MOU किया, चाहे वो अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट, तो थैंक्स टू द ई-कॉमर्स दिस कंपनीज एंड इवन वी डेवलप आवर ओन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी ODOP ने खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ODOP मार्ट, जहां पे आप डायरेक्टली जो भी आर्टिशन हैं वो अगर वो चाहे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सारे ऑप्शंस वो भी है। उसके अलावा एक गवर्नमेंट ने खुद का ODOP मार्ट लॉन्च किया है और वहां पे ODOP मार्ट में और अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ जो भी हमारे टाई अप हुए हैं वहां पे उनको ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है, उनके डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है। उनके जो भी कैटलॉग हैं, क्योंकि जो छोटे आर्टिशन हैं दे आर नॉट टेक्निकली साउंड की अपना खुद का कैटलॉग बनाए, खुद की फोटो लें, उसको अपलोड कर पाए, उनको पता भी नहीं है वो सारी चीजें। तो हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट के साथ ये बात की कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हमारे आर्टिशन को ट्रेनिंग दीजिए, उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए। जब 1 साल 2 साल की हैंड होल्डिंग हो पाएगी, जब एक अवेयरनेस फैल पाएगा तो वो बूम करेगा। तो थैंक्स की ई-कॉमर्स कंपनी ने भी हमें काफी सपोर्ट किया। ODOP मार्ट भी काफी हमारा अच्छा कर रहा है, उसमें भी हमारा काफी आर्टिशन जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। सो आई बिलीव किसी भी स्कीम में तभी कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जब टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जितना ज्यादा और जितनी जल्दी कर पाए। देन हमारे अभी तक टोटल कुछ 11-12 MOU साइन हो गए डिफरेंट बॉडी से। इंडियन IIP से हो गया पैकेजिंग के लिए, NIT रायबरेली से हो गया है हमारा इसके लिए आपको डिजाइनिंग के लिए। हमारा सिडबी के साथ में ऑलरेडी MOU है।
उसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा 59 मिनट्स लोन है. So we are working in the collaboration mode. We believe that different organizations doing the same thing. If you are working together, it will grow. So ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं. जैसे काला नमक राइस के बारे में सुबह मंत्री जी ने बताया था, तो मैं आपको बता दूं काला नमक राइस का प्रॉब्लम ये था कि जो भी फार्मर्स थे वो उनकी रीच नहीं थी. जापान में, रशिया में, बहुत सी कंट्रीज में काला नमक राइस जाते थे. जापान में हमारे काला नमक राइस बहुत ज्यादा जाता था. और मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं जो काला नमक सिद्धार्थनगर से मंगाता था वो मुझे 100 रुपीज केजी पड़ता था. वही सेम राइस यहाँ पे लखनऊ में 180 रुपीज केजी बिकता था, सेम राइस. तो उसमें इतना ऑप्शन था कि रॉ खरीद के भी केवल उसकी पैकेजिंग अच्छी करके, ब्रांडिंग अच्छी करके, उसका इतना बड़ा स्कोप था. हमने क्या किया, हमने वहां पे 4 एफपीओस के साथ में कोलैबोरेशन किया और उनको फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया. उसमें से 3 के भी चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं. एक 120 फार्मर का एफपीओ जो था वो प्रॉपरली सारे क्वालिटी चेक्स वगैरह सब करके स्टार्ट हो गया. बुद्धा राइस, राइट, बुद्धा राइस के नाम से उन्होंने लॉन्च किया. 300 रुपए किलो. अगर आप अभी भी फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे बुद्धा राइस के नाम पे 285 रुपीस केजी वो बेच रहे हैं और सक्सेसफुली वो बिक रहा है. Still, they do not have good branding and packaging. We are, even personally, I am helping them and requesting you guys, if someone is having a good such kind of packaging और branding, कोई body है कोई, आप help करिए तो उनको अभी और better वो कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने ई कॉमर्स के थ्रू वहां के काला नमक राइस को हमने इस स्तर तक पहुंचाया कि इंडिया के बाहर भी आप इजीली खरीद सकते हैं. उसके बाद हमारा सहारनपुर का वुडक्राफ्ट था. सहारनपुर में प्रॉब्लम क्या थी कि जो वो था टिम्बर प्रोडक्शन था या जो भी रॉ मटेरियल था उसकी अवेलेबिलिटी की इशू था, क्वालिटी का इशू था और उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी जगह नहीं थी जहां पे उसको स्टोरेज किया जा सके. तो हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का एक काफी बड़ा स्टोरेज प्रोवाइड किया. हमने रशिया के एक पर्टिकुलर टिम्बर से रिलेटेड एक वो है सप्लायर है, वहां से कनेक्शन कराया जिससे डायरेक्ट रशिया से जो पर्टिकुलर क्वालिटी टिम्बर था उसको भेजा जा सके, जिससे जो उनको एक तरीके से आप कह लो जो हैवीली फ्री चार्जेस देने पड़ते थे वो काफी डाउन हुए. सो ऐसे ही हमारे वाराणसी की भी सक्सेस स्टोरी है और आजमगढ़ की है, बट मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा और यहाँ पे मैं अपनी बात क्लोज करना चाहूंगा. जो हमारा लक्ष्य है मैं आपको खाली बताना चाहूंगा कि कैसे हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकते हैं. जो हमारी 5 एजेंडा पे हम काम कर रहे हैं कि जो भी हमारा ओडीओपी का जो हमारा प्रोडक्ट है हम चाह रहे हैं उसको नेक्स्ट 5 ईयर में वैल्यू वाइज उसको हम डबल करें. और जो भी हमारा एक्सपोर्ट है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2019-20 में 38% बढ़ा. तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम इसको डबल करें. और जो हमारे 22 सीएफसी सेंटर अब तक बन चुके हैं, हम चाहते हैं कि 75 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में सारे के सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में एक सीएफसी सेंटर एस्टैब्लिश हो जाए. और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके चैलेंजेस हैं, जो भी गैप्स हैं, जो आइडेंटिफाई करके मैच्योर लेवल पे वो इकोसिस्टम रन करने लगे. और ऑब्वियसली जितने भी हमारे आर्टिशियंस अभी हैं हम चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनको इतना हम बढ़ा दें, इतना हम उसको इकोसिस्टम को ग्रो कर दें कि और ज्यादा से ज्यादा आर्टिशियन बने और हम डबल कर पाए साइज को. इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. थैंक्स अ लॉट. बहुत ही अच्छा विवरण दिया गौरव जी ने और कितना पोटेंशियल है ओडीओपी प्रोग्राम में और कितनी अचीवमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है. काफ़ी अच्छे से बताया गया. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आई थिंक आभार डिपार्टमेंट का और ईवाई का और ओवरऑल ऑल द ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अदर पीपल who have collaborated to create such a vibrant ODOP ecosystem and ODOP economic engine in UP. So hats off to each of you. And let me invite our next speaker, who is from Flipkart, Mr. Hassan Yaqub, who is chairman of E-Commerce Council of CIA UP and associate director of Flipkart Group. Please give your address. And as Gaurav has already explained, that they have been playing a very, very important role in ODOP. Over to you. Very good afternoon, everybody, eminent listeners also.
Thank you so much. I would like to congratulate first Mr. Ravi Gupta and entire team of Elets for organizing such a wonderful program initiative and a sort of gathering which will be helpful for each other. बहुत बहुत मुबारक आपको. The time is less, lunch is nearby, will not take a long time for you. I would like to divide my sharing of dialogues in two parts. Number one, how e-commerce has played a role till now and is being continued for the betterment of Uttar Pradesh artisans, MSME sellers, etc. and how it could be helpful and we could be instrumental for the people who are sitting in this room. The objective, we can say, जो आपका शीर्षक है उभरते सितारे, रवि जी, उभरते सितारे एक बहुत अच्छा आप लोगों ने शीर्षक रखा है. जाहिर सी बात है, उभरते सितारे फंड इज अ इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, but this is the first time I'm listening that any of the organization has conducted on this topic. उभरते सितारे है, उभरता उत्तर प्रदेश. E-commerce sector is also a Ubharte sector. E-commerce right now is playing a significant role in the upliftment of the MSME sellers. We can say Ubharte MSMEs, Ubharte entrepreneurs, Ubharte startups, Ubharte artisans, and especially to the rural class people. या उभरते विलेजर्स भी आप कह सकते हैं. See, till now, e-commerce has played a significant role in the transformation of the artisans to the MSME sellers. See, Mr. Gaurav has already spoken about the ODOP as a wonderful initiative taken by government of UP, and it is doing, the entire world is appreciating about this product. So I will not speak much about the ODOP. We have played a good role and we are working shoulder to shoulder with ODOP definitely, and we are always there. I just wanted to speak about the artisan and the people who belongs to rural area and who wants help for their upliftment. I think which is the basic role and initiative and objective of ODOP. So e-commerce is right now playing a role at the ground level, how to encourage people, how to invite people just to get the national reach for selling their product, for getting the brand visibility, for the revenue generation. These are the aspects which are helpful right now for the artisan and the MSME sellers. E-commerce is also playing a good role in sustainability also. Recently, Honorable CM was there in the this climate summit. So entire e-commerce is working and numerous companies have already passed the mandate that we will use no plastic. We will use the sustainability model, including the e-vehicles also. So e-commerce also playing a role in the climate and this environment healthy infrastructure. How e-commerce is presently playing a role for the betterment of artisans, number one. When any of the artisans get attached with us, we firstly try to inform them about the benefits, how to onboard, how to do cataloging, how we can assist them in the photography, how to list their products. We also give warehousing support and number of things which we always try to bring on the table of the person who is not very much literate. As a result, when one of the artisans from any rural area gains the pace in his business, definitely adjacent people, neighbors of this particular artisan get motivated how he is doing and we cannot do. One benefit of the e-commerce and national issue artisans and MSME sellers that a new generation is coming in their business of their father, their parents. Because
artisans at the rural level are not aware with the IT infrastructure and they are not IT enabled. So they always try to seek help from their children कि भाई हमने अपना तो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं जमाने से हम कर रहे हैं. Now this is the trend of online era. So their children are coming up as an entrepreneur. Earlier they were only involved in the manufacturing of their product. Now their children are coming as an entrepreneur. They are very much keen to develop their own startup, their own brand. I think this is a really helping cause for the artisan and for the MSME sellers in Uttar Pradesh. And as Gaurav was speaking, Kala Namak, we proudly say that we have also onboarded Kala Namak on our platform. So these are the some things which are right now e-commerce is doing. Now, I will not take much of your time. Just to conclude how we could be helpful for the people in nearby and the people who are not here, you can also communicate. See, we have different programs. What the benefit we are giving to the artisans and MSME sellers. If the person is having artisan card and GST also, because on e-commerce GST is necessary. If the person is not having GST, our team also try to help just to procure GST number for them. Number one, we give benefit to free cataloging, free photography at their doorstep. We don't ask कि आप यहाँ पे आ जाइए. हम उनके घर पे जाते हैं, उनके शॉप पे जाते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, कैटलॉग बनवाते हैं, लिस्टिंग कराते हैं. We also train them कि how to list product and in what manner how they should portray their product and with respect to the market in terms of revenue. So these are the things which we are trying to bring for the people of Uttar Pradesh, and we are, I think it's a privilege and honor that we are part of ODOP as a e-commerce partner. और तो अभी तो शुरुआत है, जैसे कहा 1000 करोड़ की शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम बहुत दूर है. And thank you so much for the eminent gathering here and listen, patient listeners. You know, this is a lifetime I think alive. I will not make much time, and my best wishes to Elets for organizing this program and in future keep on doing such a wonderful job. Thank you so much. Jai Hind. बहुत ही अच्छा स्पीच याकूब जी. और as you have mentioned that your organization is working hard for training of the artisans and building their capacity for working on online platforms like Flipkart. So hats off to you and your organization for taking these initiatives at the grassroots level, which is very important. And hats off for collaborating with ODP in such a important way. So this we will conclude this session. From now, keeping in mind that we are at the lunch time. So if you have any questions or clarifications, you can ask the speakers at the lunch time. So I will request you all. And we have interesting sessions after this lunch also. So I will request all our audience to please stay back. And so if you have any closing comments? Yeah. Before we close, a request to everybody here, any of the NGOs is also invited because many people would be aware with the NGOs and they are involved in with the artisan, any sort of manufacturing of the local products. So they are also welcome. Anybody, any NGO can contact us and we will try to give all sort of help to NGO and SHGs also. Thank you so much. A great point. Gaurav, any closing remarks you want to do? If anyone is having any kind of a suggestion or any help in terms of helping artisan in terms of intervention, whatever it is, you can send the query or maybe suggestion at odopcell, odopcell at the rate of gmail.com. So we will conclude here and requesting our colleagues to
come on the stage. थैंक यू याकूब जी और थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। ये एक छोटा सा मोमेंटो डॉक्टर रवि गुप्ता और एलेट्स फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए। वी विल नाउ टेक अ ब्रेक फॉर लंच, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने लोग यहाँ पे हैं कि प्लीज लंच के बाद जरूर रहिएगा, बिकॉज वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस पोस्ट लंच ऑल्सो। एंड हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर सेशन मेन हम लोगों ने रखा है हमारे आज के स्पीकर्स के साथ, वो लंच के बाद ही रहेगा। सो यू कैन ऑल टारगेट योर क्वेरीज टुवर्ड्स ऑल आवर स्पीकर्स, जितने भी हमारे स्पीकर्स आए हैं आज यहाँ पे, उनसे आप क्वेश्चन आंसर सेशंस में अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। We will now take a break for lunch, but please lunch के बाद आप लोग वापस इस सेशंस के लिए जरूर आइएगा।
कि कुछ लोग अभी भी लंच के लिए बाहर हैं. आई वुड एक्सपेक्ट कि सब लोग जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं, because we need to kick start our program next sessions. के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इसके बारे में हमें जानकारी दी. Then we had a session on there was a presentation on Ubharte Sitaare program where we had some very interesting conversation from people from the Exim Bank and SIDBI. We had Miss Meghna Joglekar, we had Mr. Rahul Mazumdar, we had Mr. Srikant Das, and we had Miss Shivangi Singh, ACI Department of Industries, Government of Uttar Pradesh, जिन्होंने हमें ये बताया कि थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या नए नए इनिशिएटिव दे रहा है ताकि वो एमएसएमई सेक्टर को एक्सपोर्ट से जोड़ सके. नाउ वी हैव दिस सेशन ऑन impetus to brand India and employment generation, and I would like to invite our speakers on the dais. I would like to invite Miss Meghna Joglekar, General Manager India Exim Bank. हमारी लंच के बाद एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, तो वी कैन हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. And I would also like to invite Mr. Srikant Das, DGM SIDBI. And I would like to invite Sri Mohit Suri, Chairman, Indian Industries Association. And Mr. Parvesh Jain, General Secretary, Laghu Udyog Bharti. And the session would be moderated by Dr. Ravi Gupta. Over to you, sir. Namaskar. Welcome to the last session of this conclave, Ubharte Sitaare of Uttar Pradesh. And we have an exciting mix of the panel here. We have the industry associations and we have the bankers, Exim Bank and SIDBI here. So let me, without any ado, get into the session. We had an interesting discussion on the overall Ubharte Sitaare scheme in the first half. We had the presentation of the Honorable Minister, the Principal Secretary, and the major bankers, Exim Bank and SIDBI, who have presented. And also we heard about ODOP and also from Flipkart. In this session, we will first of all request the industry associations, Indian Industries Association and Laghu Udyog Bharti to talk about their experience on MSME sector, the challenges and opportunities in the state of UP. And
Then we will request our bankers to give their comments and inputs. So let's start with Shri Vishal Gupta, who is sorry, I think Pradesh Jain is here. Pradesh is here from Lagu Udyog Market. So I will request him to speak first. Over to you. सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इतने कम ड्यूरेशन में इतना वंडरफुल प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। हम लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अगर कोई कार्यक्रम की बात आती है तो शायद दिन में महीनों की बात करते हैं कि महीनों में जाकर के इतना इस तरह का प्रोग्राम होता है, वो भी इतना शानदार तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है। और अभी जैसा मैडम बता रहे थे कि ये बहुत डिलीशियस फूड था, तो फूड के बाद एनर्जी भी हमारे पास आ गई और मेरी एनर्जी भी आपको महसूस हो रही होगी। तो डैश पर बैठे हुए मजुमदार सर, मेघना जी, सूरी साहब और जितने डेलीगेट्स हैं, मैं सभी से अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ विशाल गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष को उपस्थित होना था, किंतु इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाए और मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लघु उद्योग भारती पैन इंडिया बेसिस का ऑर्गेनाइजेशन है, एमएसएमईज को हम लोग बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सरकार तक लेके जाते हैं और सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी जो सेशन है उस सेशन में एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। तो सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है, हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं उनके टेन्योर में। और आज ही के सेशन में जैसा बातचीत हुई कि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपना एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट बना देना चाहते हैं। केवल यूपी की बात ही पैन इंडिया बेसिस के ऊपर हर जगह हम जो है एक्सपोर्ट को आगे लाना चाहते हैं। सपना देख लेना एक अलग बात है, लेकिन उसके सपने के साथ साथ हमारे थ्रेड्स, हमारी वीकनेस और हमारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस की बात अगर मैं करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टिल आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। आज भी हम किताबी एजुकेशन पर भरोसा करते हैं। एज कंपेयर टू ग्लोबल कंट्रीज अगर हम अपनी एजुकेशन पैटर्न को देखें तो जब मेरे बेटे ने यहाँ इंडिया से बीटेक किया तब की एजुकेशन और जब वो एमएस के लिए यूएस में गया तो दोनों को जब हमने कंपैरिजन किया तो ऑयल फील्ड से बिलोंग करता है, पेट्रोलियम सेक्टर से वह मेरा बेटा, तो यहाँ पर उसको में जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली ही नहीं। एक तरह से आप ये समझिए, जब वो समर ट्रेनिंग के लिए गया वो एजेंसी वगैरह में ऑयल इंडिया के अंदर, तब उसको रिस्क पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जब वो यूएस में जाता है, यूएस के अंदर वो अपना एजुकेशन स्टार्ट करता है, तो डे फर्स्ट पे उसकी ट्रेनिंग ही रिस्क से स्टार्ट होती है। और जितना आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है, पूरी उनकी करोड़ों डॉलर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर खर्च किए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा वो लोग रखते हैं। क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वो किसी भी फील्ड में बच्चा जा सकता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में वो साथ में खड़ा रहता है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है कि हमारी स्कीम्स सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे पास 7.34 करोड़ लोग जो हैं वो 20 साल से कम एज के हैं और जो शायद कभी स्कूल तक नहीं गए हैं। इसके साथ साथ हमारी 50% एजुकेशन ऐसी है जो शायद जिनके पास जॉब नहीं है, और जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनकी संख्या 6 टाइम्स है। कहने का तात्पर्य कि हम सपना तो बड़ा देख सकते हैं, सपना देखना भी चाहिए, कंजूसी में सपना देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें रियल ग्राउंड पर भी उसमें एफर्ट्स करने चाहिए। इस तरह के सेशंस बहुत कम होते हैं और इस तरह के सेशंस में हम अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और जो चैलेंजेस है वो किसी न किसी रूप में आगे सरकार तक ट्रांसफर होते हैं और उस पर पॉलिसीज बनती है, उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं।
सरकार बढ़िया करना चाहती है, इंडस्ट्री भी बढ़िया करना चाहती है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वाइड गैप है। और जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा तब तक सरकारी स्कीम्स केवल खोखली साबित होगी, कागजों तक सीमित रहेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप गूगल पर सर्च करके डालिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो शायद इंडिया की पोजीशन 70वें 80वें पायदान पे आती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है कि आप आइए, आपकी इच्छा शक्ति, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपने कहा कि मुझे इतनी कैपिटल की जरूरत है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इतनी मशीनरी की जरूरत है, टेक्निकल नो-हाउ की जरूरत है, सारी चीजें आपकी फुलफिल होती है क्योंकि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन शायद इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अभी सिडबी की स्कीम बताई गई, 25% मार्जिन की बात कही गई, तो 25% भी आखिर लाएगा कहाँ से वो पर्सन? उसकी इच्छा शक्ति, उसके पास नॉलेज है, किसी तरह से टेक्निकल ओवरव्यू लेके आता है, तो पैसा लाएंगे कहाँ से जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कोई एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इसके साथ साथ पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता है। और इसके दूसरी तरफ आप ये भी समझिए, अगर कोई व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर हमारा क्राइम रेट है वो भी रिड्यूस होता है, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहती है। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हम जब ग्लोबल कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा % के ऊपर जब ब्याज मिल जाता है, ब्याज पर पैसा मिल जाता है। यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की 12%, 14%, 15%, और प्राइवेट सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 9%, 10% की बात करते हैं, लेकिन फ्लैट होता है। और जब वो कन्वर्ट होकर आता है तो 24%, 25%, 30% के आसपास जाता है। तो अभी चैलेंजेस बहुत है। हम एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगेन इंडस्ट्री की परेशानी है कि जिस तरह का कैलिबर हमें चाहिए उस तरह के लोग यहाँ पर नहीं है। किताबी चीजें होती है, क्लास की आपको पोजीशन मालूम है, प्रोफेसर आते नहीं है, टीचर्स भी बंक करते हैं कॉलेजेस के अंदर। अब जब एक यूथ हमारे पास में आता है तो उसको हम कैसे अपनी इंडस्ट्री में रोजगार दे सकते हैं? लेकिन उदाहरण भी हमारे समक्ष है। अगर हम एडिसन की बात करें, हम बिल गेट्स की बात करें, जेफ थॉमस की बात करें, और अगर हम बड़े इंडस्ट्रिस्ट की बात करें तो शायद उन्होंने 30 साल की एज में बहुत अच्छे बड़े अचीवमेंट्स किए। तो संभावनाएं बहुत सारी है। माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट हमारे घर से स्टार्ट होगा। हम अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और उसको तैयार करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन क्या हम उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं? तो शुरुआत घर से होगी और निश्चित है अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे तो परिवर्तन मिलेगा और हम वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद प्रवेश जी, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे आपने उठाए हैं जो हमारे एजुकेशन के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, और ईज ऑफ बिजनेस के बारे में है, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में है। तो जो क्रिटिकल जो चैलेंजेस एक एमएसएमई को, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने होते हैं, वो आप सभी ने बातें उठाई। और आपका ये कहना सही है कि हम वी कैन aim for a strike, but we also have to solve our fundamental issues. Thank you for highlighting this. Let me request Shri Mohit Suri ji, जो chairman है Indian Industry Association के, to come on the stage and give his views on the subject. Good afternoon. Good afternoon, members present on the dais, ladies and gentlemen. It was in the year 1985, 38 years or 37 years from now, that a young Prime Minister from India went on the world stage and gave a speech which I still remember. I am young and I dream of an India self-reliant, self-efficient. Those words were very good and they were today's thinking. But unfortunately for last 37 years, we did not see actions on the ground to make India self-reliant, self-efficient. First of all, I am very thankful to this state government and the central government who are at least trying to live that dream. The pandemic, which we were hit by 2 years ago, that has completely changed
what the world thinks and what India thinks. I will first talk about the challenges. The challenges which the pandemic has created. It has changed the dynamics of industry completely, and especially for a MSME industry. And I'm not very sure that what the future lies for the MSME industry in the country today. Whether the way the government's will is there to promote MSME, but what these ground realities are. Every MSME industry is badly hit. There might be a difference in percentage due to the pandemic. And the way the raw material prices are going up, the way the working capital requirements are going up, it is very unrealistic because for last 2 years, all SMEs have suffered losses and prices of each and every commodity in last 1 year or 2 years have gone up by 70%, let it be steel, let it be plastic, let it be rubber. आप सबको पता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का क्या हाल है। आत्मनिर्भर सितारे program is a very good initiative by Uttar Pradesh government, particularly at a time when the world is looking at India. After pandemic, the world is looking at India to be its main supplier partner. And we have the entrepreneurs, we have the MSMEs who can cater to the world. The only thing we lack, there are two factors in which we lack in. One is technology upgradation to the MSME sector. And thirdly, as Sir rightly pointed out, cheaper credit. I think if the SME in India gets these two things, there is no stopping us, and we will definitely be replacing China in years to come. There are certain suggestions which I would like to give. One is digitalization platform, digital platform to connect buyers who are established suppliers with the manufacturers. This would really help the SME sector if whatever small products they are making, if the government can help to get them buyers in India and abroad. The initiative taken by the government on the O2P is also very good. The government is rightly thinking, the government's focus is to stop exports from China and manufacture those products in India. For example, toy industry. I don't know if someone is here from toy industry. Toy industry is going through a major reform. Before pandemic, we had 90% of our toys coming from China, which has drastically changed now, and a lot of toy manufacturing has started in India. There are certain challenges which the exporters are facing that also needs to be pointed out. One is the pending GST refunds. The pending GST refunds of MSME exporters is running into crores and crores, which is a big bottleneck at this stage where working capital requirements, because of the commodity rise of the prices, have gone up, and on top of this, such sort of a problem is adding to the problems of working capital. The second is international trade. International trade, due to the imbalance of containers, is also causing a lot of havoc in exporters. Their costs have nearly gone up 3 to 4 times. So if we actually want to be Atmanirbhar and we want more Ubharte Sitaare, these major concerns need to be addressed. As before I end, I would like to say that all those SMEs who have survived this pandemic and who have survived the last 30 years in Uttar Pradesh are definitely Ubharte Sitaare. Thank you. Great speech, Mohitji. I think you have highlighted that survival of the pandemic itself was a huge achievement for the SME sector, and those all who have survived are in fact the Ubharte Sitaares of this situation. So great point indeed, and we have with us our
banking speakers, Mr. Shrikant Das, who is a DG of the city. So I will request him to speak, please. Once again, good afternoon to all respected dignitaries of the dais and my exporter friends and officials from government departments. Actually, this topic, this has become more alarming. I can say, if you see pre-COVID and post-COVID, I just, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी आपके लिए बोलूँगा, though my Hindi is not good. If we compare pre-COVID and post-COVID, then you have to understand the alarming situations of employment. In COVID, you might be knowing that काफी लोग जो काम कर रहे थे डेवलप्ड स्टेट्स में जाके यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से काफी लेबरर्स वहाँ गए थे एंड जब कोविड का शुरू हुआ एंड मेनी मोर इंडस्ट्रीज आर क्लोज, मैंने ऑलमोस्ट 100% units shut their operations because it's a lockdown. They have no option and they again we call it reverse migration. तो यहाँ से गए थे but ये जो situation हुआ they again come back. But after some days they saw that there is also equally alarming situation in their own state, so therefore again they came back. You see the situation around how much people lost their lives. And okay, so this was created actually. This is the situation. ये एक situation हुआ जो कि गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर था कि एवरी स्टेट में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम क्रिएट करना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग अपना स्टेट छोड़ के ज़्यादा दूसरा स्टेट में जैसे नहीं जाए. अच्छा, ये एक चीज़ है. आपको सबको पता होगा हमारा देश में एग्रीकल्चर गिव्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड नेक्स्ट कम्स द एमएसएमई. एंड अगर कोविड में सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कोई हुआ तो वो था एमएसएमई. एंड ये एक चीज जो हमने यहाँ से फील किया. थर्ड चीज हम बताएंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट का आज का दिन में हम चाहेंगे जो ग्रोथ देखें, इफ यू सी द ग्रोथ ऑल्सो देयर इज ए ग्रोथ. यू सी पोस्ट कोविड देयर इज ए रिकवरी एंड द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट इट इज ए जॉबलेस ग्रोथ. व्हाट वी आर टर्मिंग इट. ग्रोथ हो रहा है बट देयर इज नो न्यू जॉब क्रिएशन, नो जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज देयर. So government has started also giving focus on that with growth, adequate employment opportunities should be created for the people. इसके लिए चाहिए क्या? चाहिए single most important thing is skill. There is a huge demand from various sectors, but there is no adequate skills. To address this issue, CDB has come forward with organizing so many skill training programs for the different sectors. We are organizing how to enhance the skills of the different sectors. Even many programs have been organized in our grant funds to see that people are adequately skilled to meet the requirements of the industries. आपको एक सेक्टर, आई डोंट नो आप लोगों को कितना दूर पता है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन दिस कंट्री. माइक्रो फाइनेंस सेक्टर गिव्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, मीन्स ईच पुअर वुमन इज एंटरप्रेन्योर. They give opportunities, create opportunities not only for their family's livelihood, but also they create opportunities for other poor women in the villages. CDB in a large scale supporting these microfinance institutions, self-help groups, NGOs, so that adequate entrepreneurship can be created at the village level, at the block level and district level, so that many more will get the opportunities there itself and don't migrate to elsewhere. Another important thing, we are continuously organizing entrepreneurship programs across the country. Entrepreneurship for women, entrepreneurship for backward classes, entrepreneurship even for students. To catch them young. Students लोगों को कितना, students को at that point of time we just develop the spirit of entrepreneurship. In Lucknow, we have already, this program is continuing with the leading management institutes. To start with 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग के प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहे हैं. जो उनका लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटिन्यूसली एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं. गवर्नमेंट से क्या क्या इंसेंटिव्स मिल रहा है इंडस्ट्रीज के लिए, दैट वी शेयर विद देम द इंफॉर्मेशन. तो फ्रॉम दैट स्टेज दे हैव अ माइंड
Okay, this another thing is our support for startup. Should be in a big way supporting the startups also. Acha. Then actually there is another problem for these people, so that is marketing. To address this issue, anyway, we are helping them to participate in exhibitions, fairs, and to develop their quality of the products. In Lucknow, forget about that. This Lucknow Expo is coming on. As you know, it is going to be held from November 13th to 22nd. Any vendors, artisans wants to display their products, sell their products, we will give them free of cost stall. अगर आपके सपोज नॉलेज में कोई आप चाहते हैं कि ये इज इंटरेस्टेड टू हैव ए स्टॉल इन दिस लखनऊ एक्सपो, वी विल गिव देम द स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट. और जो आदमी उधर रहेगा स्टॉल में, उनका जो खाना भी, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा, दैट आल्सो विल बी हियर. वी हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टॉल्स. प्लीज अगर कोई है तो आप बताइए, सीधा हमको फोन करिए, सीधा बस हम उनके लिए अरेंज करेंगे. तो हमारा जो एफर्ट है सिटी का, बैंक का, कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, कैसे पर्टिकुलरली दिस सेक्टर्स जो वीकर सेक्शंस, जो those themselves cannot create a marketing opportunities for them, they cannot come to the Flipkart, they cannot develop a brand, they have to go to the rural hearts, they will go to the village, some fairs organized by some agencies or government, they can only sell their products. But this is the, I think this was the forum where I shared my whatever information I had. Thank you. Thank you. Thank you, Shrikant ji. I think you have highlighted that how City is trying to help entrepreneurs, especially the micro entrepreneurs in this pandemic situation, so that they are able to access new markets and new opportunities. Thank you for that. And let me request Meghna Lekal ji. She is a General Manager India for Axis Bank, to give her views on the various schemes and various opportunities. Thank you so much. This is, of course, a last minute addition sort of a thing. But it was very interesting to hear the previous two speakers as well. I mean, I think your thoughts in terms of education, and what struck me was the fact that when you mentioned that, are we kind of thinking that, okay, my child will go ahead and go and export. That was something very, very interesting that you mentioned. Mohit Suriji, of course, you raised a very interesting thing about especially the Indian toy industry. I think this is the Prime Minister, Honorable Prime Minister is giving a lot of push to this sector as well. And a lot of dependence from China has come down on this sector. In fact, I just wanted to mention, these are the sort of sectors under the Ubharte Sitaare we would definitely look at supporting, because it goes with the whole theme, it is Make in India. And if we are able to, as I mentioned in my earlier thing also, if you are able to export, I think that determines the whole quality of the product itself. So especially in the toy sector, if we are able to produce the kind of, reduce our import dependency, it is import substitution, and plus we are able to export as well, I think that is something like, definitely a Ubharte Sitaare worthy fit sort of an initiative. So I think, of course, I think the current panel was about brand India and employment generation, and I think this whole, as I mentioned, the Ubharte Sitaare program is sector agnostic, and the fact that we are today, our objective is to try to create world champions with export potential itself, is sort of promoting brand India. We are sector agnostic. Otherwise, at Exim, we are fully geared to sort of support these, and as far as the small and medium enterprises are concerned, this is now our flagship offering that we are doing that. And in terms of, which I covered in my earlier thing as well, in terms of the overall macro support, which this program is, of course, job creation and overall economic growth. I think I'll just stop at that, if my previous speakers have covered everything very well. And once again, if there are any questions, please feel free to reach out to us. We'll be very glad to assist with your queries. Our details are available on our website as well, and you can reach us out at seed@eximbankindia.in. We'll be very happy to engage in a bilateral discussion with you. Thank you so much.
Thank you, Megha ji. Thanks for highlighting the fact that Ubharte Sitaare program is to like, create the future exporters of the country. Like there are many coaches who are trying to create the future Olympians of the country. So I think it's a great initiative. Hats off to our leaders who have created this program. And we are at the, like if any of the audience has any questions or clarifications, you can take that, or if not, we can end it here, right? So thank you all for an amazing day. I have like personally learned a lot here, and good to see that so much initiatives are happening, and also great to have inputs from our industry associations regarding the challenges we have in growth of SMEs in the country. So handing over to our anchor, Tarannum, so please conclude. थैंक यू सो मच सर. इनफैक्ट ये सेशन तो आई बिलीव सबके लिए बड़ा एनरिचिंग रहा होगा, बिकॉज इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों को पकड़ पाना और उनसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में और इंडस्ट्रीज के इनिशिएटिव्स के बारे में पूछना भी आसान नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी पीपल. थैंक यू मोहित जी, थैंक यू परवेश जी, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू रवि सर कि आपने इतना अच्छे से मॉडरेट किया इसको. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट रवि सर टू प्रेजेंट स्पीकर मोमेंटोस टू two of our guests, Pradesh Jain ji. And a memento to Mohit Suri ji. I think आप लोग तालियां बजा सकते हैं. And I would like to invite all the delegates on the dais to come together for a group picture. We'll also give a round of another set of mementos to Ms. Archana Jovlekar. Just a reminder कि मैम आपने दोनों सेशंस में हमारे साथ दिया था. And another memento to Srikant Das as well. बहुत छोटा सा हॉल है, अगर हम लोग तालियां बजाएंगे तो बहुत जोर तक ताली की आवाज आएगी. And we want all our members, like all the delegates on the dais together for a group photograph. और ये थोड़ी सी एनर्जी बरकरार रखिएगा क्योंकि अभी हमारा एक Q&A सेशन भी है. We have a very active Q&A session.
चाहती हूँ यहाँ पे, बिकॉज जिन लोगों ने इतने कम टाइम पे इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करा है, कुछ लोगों ने तो सिर्फ 2 घंटे की नींद में करा है, उसको तो स्पेशल थैंक्स होना चाहिए। एंड सर ऑल द वे नोएडा से आए यहाँ पे दिल्ली से, पूरी इंटायर एलिट्स टीम, कैन आई हैव यू इन द ऑडिटोरियम प्लीज, एंड ऑल आर डेलीगेट्स हियर, जितने भी हमारे आज के स्पीकर्स थे, ऑल आर डेलीगेट्स। आई थिंक वी हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ। The entire Elets team, please, on the stage. And I would expect नीचे बैठे हैं प्लीज, मतलब हम लोगों के लिए भी इतनी मेहनत हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, गुड राउंड ऑफ अप्लॉज हो ही सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रवि सर हमको इस प्रोग्राम के लिए गाइड करने के लिए। इनफैक्ट विदाउट हिज गाइडेंस आई थिंक इतना जल्दी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। ही इज बीन ऑन व्हाट्सएप कॉन्स्टेंटली गाइडिंग अस फॉर every minute, everything. Elets team on the dais, please. स्टेज पे सब लोग स्टेज पे प्लीज, the entire Elets team on the stage. बहुत बहुत धन्यवाद all the speakers and all the delegates. Thank you for joining us. We are grateful to each of you. Looking forward to more workshops and seminars like this. Thank you so much on behalf of Elets. Thank you. Namaskar to each of you. Thank you. And a special thanks to our Elets team for doing this event. Great event. Yeah. Thank you, each of you. Manav, Ritika, Saurav, Deepak, Taranu, Vijay, Vipin, Manishi, and his colleague in yellow t-shirt.
Ashish, and all the team. I think I would have forgot some names, but thank you each of you and all our backend team who's not here. Thank you और हम लोग इलेक्ट्स वाले यहाँ पर आ जाते हैं right?
Thank you.